Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, आज तो literally all to see ही होगा world में क्योंकि I think probably I'm guessing it'll be one of the most watched, Champions League semi-finals in recent times. Not that we weren't there, of course. A Chelsea fan hates, I kind of don't like it. We're not in semi-finals, but for this big semi-finals, I thought let me get on a Liverpool fan who is going to play the next day. देखते हैं उसका क्या reaction होता है because how he reacts to certain situations. It is Man City versus Real Madrid. I don't know. I've not spoken to yet about this game in particular in detail yet. Uday, welcome to Almighty Blues FC again. क्या लगता है? Firstly, कौन जीतेगा और कौन चाहते हो आप जीते? थैंक यू अंकित. अंकित, आई फील मुझे ये लगता है कि दोनों टीम से मेरा कुछ ना कुछ लेना है. मतलब इनसे 2018 रिवेंज लेना है मुझे मैड्रिड से. तो मैं चाहता हूँ कि मैड्रिड सिटी को हराए, पहली बात. और दूसरी बात, सिटी को अगर हम फेस करते भी हैं सो इट विल बी लिटिल मोर टफ ऑन आवर बिहाफ बिकॉज यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड विद अस अगेंस्ट सिटी इन दीज फिक्चर्स. दे आर वेरी रिलेंटलेस. लिवरपूल अपनी नेचुरल गेम कुछ फेजेस में नहीं खेल पाती. तो मैं चाहूंगा कि ये गेम मैड्रिड जीते और देखते हैं क्या होता है. बहुत कंपेरेटिव होगा ये गेम. Interesting. So, Liverpool going to face two Spanish sides is what he's hoping. Uday, being a Liverpool fan, but of course he's a football fan first. Like I'm hoping everyone in the chat as well. And by the way, जो भी लोग join किए, as always, let's like the stream first thing, especially आज when I know that more than half the world is either watching somewhere else or streaming. So I hopefully जो भी है यार totally involved रहे because it's going to be fun. Trust me. ये match, let's be real, it will not be boring for sure. Not one of those watch alongs. You will have fun for sure. Just let's get along. Chomani to Liverpool, hopefully, according to reports. हर हफ्ते चौमनी हर एक क्लब चेंज करता है in terms of linking. So we'll get there, Nikhil. काफी समय है मैच के दौरान और हाफ टाइम एक्सेट्रा. We'll be discussing lots on these things for sure. अभी क्योंकि we just have literally 7-8 मिनट बाकी है स्टार्ट करने के लिए. Let's actually talk the tactics. And again, people, hopefully everyone has liked the stream. But हाँ, check out Loudmouth Football as well. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपके पहले 3-4 लाइन में आपको मिल जाएंगे सब लिंक्स, राइट? जब जस्ट क्लिक कर दो, 1-1 सेकंड लगेगा. लेट्स डू दैट. एंड यहाँ पर मैं लाइनअप देख रहा हूँ भाई उदय. मैं एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइज हुआ. नो थोड़ा इंजरीज से भी कंसर्न है थोड़ा सा. लेकिन आई थिंक द फैक्ट दैट वी आर हैविंग जॉन स्टोन्स प्लेइंग एट राइट बैक, व्हिच इज फाइन, ही हैज डन दैट, बट डूइंग दैट अगेंस्ट विनिशियस जूनियर, wow, that calls for something. Yes, Kyle Walker, obviously he's not 100% fit. I know there's no two ways about it. So Kyle Walker would have started. Cancelo isn't available for people out there who missed the preview. He isn't available. And we have Gabriel Jesus, the hero for City, starting 4 goals. Sterling is not there in such a big game. एक और बंदा जो स्कोर किया है Real Madrid के against. Very interesting. But Rodrigo and Valverde, मतलब कितने लोग वो expect किए थे? मतलब we expected one or the other, didn't we, for Real Madrid? For sure. I think I wanted Valverde to play in the midline because of the way he was performing the last match. यार लास्ट मैच में वो अटैकिंग आउटपुट नहीं दे पा रहे थे जितनी उनको देनी चाहिए थी. तो अच्छी बात है कि वो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, बहुत एंड्योरेंस है, 90 मिनट प्लेयर है, भागते बहुत हैं. तो इट इज गुड दैट ही इज इन द मिडलाइन. रोड्रिगो चाहिए था भाई. They needed pace, they needed intensity from the right flank, and this is a must addition to face the likes of Manchester City. अगर intensity match करनी है City के साथ, अगर थोड़ी बहुत possession रखनी है, so they needed Rodrigo and Junior on the flanks. Fair enough. और यहाँ पर I am actually seeing, am I seeing for real? Rishabh is in the chat. Big up यार Rishabh. ऋषभ पता नहीं आप फ्री हो आ जाओ, मैसेज करो मुझे. Definitely will be great to have Rishabh. People must have seen Rishabh in the past, right? The late winner show, pretty good stuff that he knows as well. Especially being a Ronaldo fan, I'm pretty sure Real Madrid is something close to your heart as well. So let me see, if he's free. But Mr. Phenomenal, obviously Man City fan in the house. Welcome. Man City will win. Ankit भाई एक बार बोल दो. City will win definitely. भाई मैंने बोल दिया है ऑलरेडी. आप प्रीव्यू देखते नहीं हो क्या? मतलब आप रहते भी हो फिर भी बार बार पूछते हो. ज्यादा बोलोगे ना तो जिंक्स हो जाएगा. मिस्टर फिनोमिनल वो उसको जिंक्स बोलते हैं. मैंने ऑलरेडी, मेरा प्रेडिक्शन यही है. चेल्सी बाहर हुई ना इस सीजन में. My first prediction was Man City are going to win the UEFA Champions League. Again, Madrid fans, मैं चाहता नहीं हूँ वो, but that's just a prediction. So let's get it right. मतलब it's not that I'm wanting some team. मैं neutral हूँ यहाँ पर, एकदम neutral. I just want goals. Yes, Rishabh is for Madrid. Anubhav, Benzema or KDB, whom should I select as captain in my fantasy team? Okay, looking at these teams, firstly,
मैं बोलता हूँ देख आज द वे रियल मैड्रिड हैज गॉन सर्विस रहेगा, बहुत ही मुश्किल होगा मैन सिटी को टू ब्लॉक सर्विस फॉर बेंजेमा. यस, मैन सिटी विल सर्टनली हैव मोर पोजीशन, राइट उदय, लेकिन आई थिंक बेंजेमा को सर्विस मिलेगी, मतलब दैट इज समथिंग दैट यू वुड से. सो वुड यू से दैट फैंटेसी टीम के लिए बेंजेमा इज अ बेटर चॉइस फॉर दिस Look, गेम? fantasy की team के लिए Benzema should be a better choice because we know he's been very clinical. He scored 12 goals, 5.6 XG है उनका goal scoring का. So I think he's been the most lucrative attacker and the striker in this edition of the Champions League. Benzema को तो डालना ही चाहिए. KDB can assist, KDB can score, but I wouldn't put my bet on KDB for this match. I think Benzema should be the right option. और पीपल अगेन आई नो बेंजेमा इज लाइक ही सीम्स एज दो, मतलब वो लगता है ना देखकर कि यार वो पट्टी बनी है हाथ में एंड व्हाट नॉट, व्हिच इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर, बट द फैक्ट दैट वो नहीं है इन द एलिमेंट बट ही इज देयर इन द एलिमेंट, ही इज प्रॉब्ली इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. केडीबी आल्सो यू कैन से, लेकिन ही इज नॉट इन द फिटनेस दैट ही वुड एक्सपेक्ट, वो प्राइम फिटनेस में नहीं है अभी. ये क्या है, मी गेटिंग ट्रूथ बॉम्ब्स ऑफ लाइफ आफ्टर गाइड 25 इयर्स इल्डर टू मी टॉट मी अबाउट यूट्यूब. क्या हुआ अद्वैय, ऐसा क्या हुआ? बोलिए, पता नहीं मुझे क्या कॉन्टेक्स्ट है. लेफ्ट बैक साइड ऑफ मैन सिटी इज वीकनेस फॉर मैन सिटी. ओके, ऋषिकेश बोल रहे लेफ्ट बैक इज वीकनेस. जिनचेंको, उदय ही हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस weekend. I know Watford have and all that, but I think the positioning is something that I'm talking about, right? He has improved on his positioning big time from what it seems like. Do you think Rodrigo, being that maybe you cannot say Rodrigo is kind of uncharted territory. You have seen him, लेकिन again he is not your typical starter for Madrid. So वो एक surprise element लाएगा more than Zinchenko being the surprise, obviously being a left back, right? So maybe Rishikesh has a point there. What do you think? Obviously, I think Rodrigo and Zinchenko will be something and a fair to watch. Zinchenko की positioning ऐसी है, वो attacking fullback है, so I think Nathan Ake performs a better defensive job, which he has shown us in the past couple of fixtures. But don't underestimate Zinchenko. उसमें pace है, he can definitely intersect and intercept any of the players, Madrid players on the right flank. But it is going to be a very hefty affair on the right and on the left flank, so it'll be quite a watch. But I think Madrid will be targeting more of John Stones against Vinicius because Vinicius is more lucrative with his pace, and when he shows up, he shows up. So it's ऐसा ही है, जैसा है ऐसे ही है. हाँ, मतलब अगेन यार आरसीबी फैंस और अदर क्रिकेट फैंस आरसीबी फैन को यहाँ पर सुनाते हुए और प्रॉब्ली टेलिंग द रियलिटी. फैक्ट इज दैट, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये होता है हर सीजन में, होता है लगातार 2 मैच के लिए आरसीबी हटती है. बट अगेन कमिंग बैक टू दिस, आई वुड अग्री विद उदय एब्सोल्युटली 100%. लेकिन अगेन बेंच पर देख लेते हैं क्विकली. आई थिंक वी स्टिल हैव 3 मिनट्स टू गो. बेंच में विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट उदय आप बोलोगे सर्टेनली मैन सिटी हैव अ मच स्ट्रॉन्गर बेंच. रहीम स्टर्लिंग, जैक ग्रिलिश, फर्नांडिनो, गुंडोगन, वाओ, एंड वहां पर बेल, असेंसियो, ब्रिलियंट प्लेयर्स डन दैट. लेकिन वो ये कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट? सो मे बी it's for City to kind of make changes if nothing works, right? Like for City, look, it depends on what the scoreline will be. Agar City are on the upper hand, I think they'll get in. They'd want to defend because we know Benzema can get vicious towards the last end of the game because उसका जो हंगर है वो तभी आता है जब वो ट्रेल कर रहे होते हैं मोस्टली. और हमने PSG और चेल्सी के अगेंस्ट वो देख लिया था. तो मैं फर्नांडिनो को लेकर आऊंगा because he gives you the right defensive input in the mid line. Plus, I will bring in Gundogan. If one of the midliners are not working well in the game, Gundogan is someone who can give you those passes towards the midline, and also he can give those. He can exploit those spaces. वो spaces exploit करने में बहुत expert है. And number 9 position तो उनकी वैसे भी vacant रहती है. Gabriel Jesus दिखाए हैं उन्होंने number 9 पे. But interesting point ये है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है? He likes drifting towards the right, Gabriel Jesus, but right पे Mahrez है. So do you think Mahrez will occupy more of the number 9 and Gabriel will be on the right, or what do you think? नहीं, मुझे लगता है गार्बेज जेसस, योर पॉइंट इज राइट, मतलब वो राइट विंगर जैसी खेला है, हु इज काइंड ऑफ ड्रिफ्टेड इन. लेकिन द फैक्ट दैट मारेज भी है राइट इन दिस पर्टिकुलर गेम would tell me no. I think it's got to be Mahrez who's kind of who's got to be staying wide, क्योंकि यार they need someone supplying. अब Phil Foden हाँ वो great through balls खेलता है, but he's not like a proper supplier, right? And someone who kind of pings those balls, and maybe De Bruyne not being 100% fit, maybe even I can see them overlapping as well. De Bruyne, Mahrez kind of have the right flank, वही फेयर रहेगा. एंड गैब्रियल जेसुस इस गेम में स्पेशली 4 गोल्स मारने के बाद ही हैज टू हैव द कॉन्फिडेंस. अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं तो कब रहेगा, राइट? तो फॉर मी ही हैज टू स्टे सेंट्रल, बट इट विल बी बिटवीन, यू आर प्रॉब्ली
having a point where Foden and Jesus, I can see them interchanging more because Foden also plays a number 9, right? Right. Mahrez will stay wide. I think वो होना चाहिए because again, the left side of Real Madrid is stronger, right? So they need their strongest winger out there, which is Mahrez for me, certainly. I think he's a proper winger. So वहाँ पर I think he'll stay. Amar is saying 1-1. Interesting. So 1-1 will be a great, kind of a result for Real Madrid. I don't know about Man City, but I don't know, like what is a good scoreline to take for Man City, in your opinion, Uday? Just as a neutral. If you talk about the scoreline, look, Real Madrid will get to a low block and they defend pretty well on a low block. तो स्कोरलाइन के मामले में मुझे लग रहा है 2-1 जाएगा ईदर साइड. इट वॉन्ट बी अ वेरी हाई स्कोरिंग मैच, बट 1-1 तो होगा. दोनों साइड एक एक गोल तो मारेंगे ही, इतनी गारंटी है. बट Right. मेरा एक और पॉइंट था यहाँ पे कि जैसे मैं बात की नंबर 9 पोजीशन की, आई थिंक सिटी लाइक प्लेइंग विद फोर मैन टॉप लाइन, राइट. वो भी बहुत वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैड्रिड की डिफेंडिंग काफी अच्छी है व्हेन दे सिट एट द बैक. सो आई थिंक सिटी विल हैव टू सर्च देयर ऑप्शंस, थिंकिंग कि कौन नंबर 9 पे आएगा. वो बहुत ही वाइटल डिसीजन है बिकॉज दे नीड अ गोल स्कोरर व्हिच अग्वेरो यूज्ड टू डू फॉर देम. बट अभी एट दिस मोमेंट आई डोंट सी. गाब्रियल जीसस डिड स्कोर 4 goals फॉर देम, बट इस मैच में काफी डाउट है मुझे कौन गोल मारेगा. Okay, interesting. मतलब again, let's see. मतलब ऋषिकेश बोल रहा है, I think this draw will go to penalty shootout. Like obviously वो second leg की बात कर रहे हैं, तो looks like it'll be as in a long term kind of as in a draw match for ऋषिकेश. लेकिन मुझे लगता है again it's about 1 week. Literally next week ही है next game. So I think that will be the key for me. Back end में Bernabeu में you never know what can happen. We know as Chelsea fans, मुझे पता है क्या हुआ था वहाँ पर, and I think Liverpool also played Real Madrid last season, right? So Yeah. I know it was not proper Bernabeu then, but still, there is a certain element there for sure. That आप नहीं देते हो. For me, City has to go on. By the way, match has started. Uday, has your match started? Not Yeah, yet. kick off होने वाला है, बस हो गया. Okay, perfect. So again, people, usual drill. Let's put up the likes. Let's have many likes so that we have बहुत लोग join करने आएंगे, तो basically और discussion होगा. And of course, let's hope for a good game of football. Again, जो भी अपना score prediction नहीं दिया, please give in. Let's see किसका score prediction correct होता है. तो आपका score prediction क्या था, उदय? 2-1 to Real 2-1. Madrid. Okay. 2-1. Okay. So I think that's fair, and I think Amar बोल रहे थे 1-1 all. Let's see. Again, I am seeing a much closer game. Let's see. Hopefully, we just see goals here. I'm just saying that Madrid might sit back and might hit on the counter, and they'll get one goal for sure. But again, City might get more than one goal. So again, I kind of agree with Uday there for sure. But लेकिन देखते हैं second. Oh, यहाँ पर already they are going for a ping pong kind of thing. प्रेस कर रही है मैड्रिड, काफी ऊपर प्रेस कर रही है, तो मैड्रिड आर फाइंडिंग इट टफ टू क्रिएट एनी स्पेस, बट देखते हैं. Okay, City doesn't need a proper number 9, can do with a great option off the bench. I doubt how Haaland does in his team. Yes, Adway, मैंने बहुत बार बोला भी है, like for me as well, kind of strange है. I thought City will probably go with a person like Joao Felix हो गया, one of them kind of players who kind of can float in the Havertz category. Gabriel Jesus probably was right. यहाँ पर देखो, see Mahrez is already cutting, यहाँ goal. Oh भाई साहब, what a goal! Kevin De Bruyne scores. It is not even. I am not even. God. Put on my specs to watch the watch, and oh man, what भाई do you say, साहब, man? Kevin De what a Bruyne. hitter. You know what? I know a lot of people are saying that Mo Salah, Lewandowski, Benzema. Yes, they've had fantastic seasons. Lekin I think the timing of goals that he's had, Kevin De Bruyne, in most of the big games today. Most of the big games. अब देखो FA Cup final में, basic FA Cup semi में जो हुआ था, I know it was not kind of that game, but still even before that, the game against Liverpool, the previous knockout round. Now Kevin De Bruyne, I don't know, man. By the way, that was a cross by Mahrez itself, right? If I'm not wrong. It was very tough to actually find that space, and only Mahrez can do that, or KDB can do that. But I think they got found out, man. Real Madrid, the right back. Remember we spoke in the preview as well. The right back of Madrid. Carvajal. Yeah, Carvajal, late reaction for me. It was a clear late reaction. That was the only ball, man. अच्छा वही है ना, आप मारेस को अगर जानते हो ना, he will cut in on the left. वो करेगा ही. तो it was very strange that Carvajal did not expect that. And that is like I don't know, मतलब game over तो नहीं है. KDB इतनी पीछे से भाग के आया, एटलीस्ट कवर हिम. कोई कवर नहीं दे रहा. ये तो सेम वही हो गया एस्पिलिक्वेटा ने जो गोल मारा था, जहां पे नूनो तावेरेस भी कवर नहीं कर पाया था. वो ये सेम सिचुएशन है.
Exactly. Well, Chelsea fans in eternal pain. I've seen KDB score always, bro. Always. Adwe, well, you kind of said what I'm trying to speak here. Ankit bhai, आज stadium sold out है. As a City fan, I'm not used to it. Pritesh, good one there. लेकिन हाँ, again, congratulations, bhai. City, come on, City. Yes, absolutely, get in, man, get in. But again, Real Madrid fans, what I would say, Uday, मैं तो in a strange way, I know I don't want any team to win here between the Devil and Deep Blue Sea. लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि we will get a good game. Real Madrid, जो we were all saying that maybe he'll play an Atletico kind of game. They cannot afford to do that. Maybe maximum till half time. लेकिन जाना पड़ेगा. I think they need one goal today, right? For sure. I think they need a lot more now to especially trying to overhaul City. But ये अगर City का अगर ये up front आ गया कि एक गोल मार लिया उन्होंने तो ये दिक्कत है रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी. कॉन्फिडेंस इनका मुझे लग रहा है लो रहेगा. City will try pressing them as much as they can now. और मुझे मुश्किल लग रहा है रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट कि सेकंड हाफ का पता नहीं. सेकंड हाफ में एटलीस्ट मोमेंटम अलग हो जाता है बट फर्स्ट हाफ का अभी तक मुश्किल ही लग रहा है मुझे. people watching again, carefully ध्यान से देखिए इस चेहरे को. Uday is the Liverpool fan यहाँ पर. He called it. He wants Real Madrid to win, correct? I want Madrid to win. You can see the expression, right? And then it's very clear because for him, again, I'm not calling. It's for him. Real Madrid are more beatable compared to City. That's what his kind of prediction is. Kumar is like, I'm buzzing. Ankit भैया, Adway is like, are you a B? Adway यार क्या भाई आपका sense of humor, man. Trust me, मतलब it's another level. Sorry अंकित भैया थोड़ा लेट हो गया. अरे भाई, thank you join करने के लिए always. ठीक है, absolutely बढ़िया यार. आप कभी देखते हो, it's always a good time. Never bad, but absolutely if we have more people, brilliant रहेगा because yes, come on, we can certainly triple this number watching easily, right? So let's like the stream. अगर आप by chance retweet कर सके जो भी मैंने किया है Twitter में, hopefully you guys can also retweet that. We'll have more people. Just let's have some fun. Let's have a very good game here. Walker is not playing. Yes, हमने यही बात बोली थी उदय. Until now तो मतलब I don't think Real Madrid has had a touch of the ball. No control whatsoever. लेकिन I think mistake. Ederson, man, overplaying himself. Come on, that should be a goal. Zinchenko saved it. Zinchenko, people who kind of called out Zinchenko, trust me, if he was not there. Yeah. And that was a blunder by Ederson. कल ही बात हो रहा था हम लोग का स्ट्रीम में और यहाँ पर एक और भाई इतना ओपन गेम में मजा आ जाए. लेकिन कल ही बात करी थी उदय. I think it was Renuka from the stream, right? We was talking about Courtois maybe having a few more mistakes but being a better shot stopper. और यहाँ पर Ederson already making one mistake. I don't know. मतलब आप बोलोगे Ederson, he may not be used to even touching the ball so many times in the first half. And again, Madrid probably will get a little bit more, right? But it's semi pressure. ये उनकी बिल्कुल गलती जरूर थी बट कॉर्टोआ ने भी फर्स्ट मिनट में ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन गलत दी थी बट वो एटलीस्ट वो लुक्रेटिव नहीं थी बट एटलीस्ट दोनों कीपर ने एक ही गलती कर दी है. बट आई स्टिल फील कि दोनों कीपर एक ही पेडिग्री के हैं. आई वुडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. डिस्ट्रीब्यूशन वाइज आई थिंक एडरसन इज बेटर देन कॉर्टोआ. दैट्स इट. शॉट स्टॉपिंग उसकी बेटर है. कॉर्टोआ की बहुत अच्छी है शॉट स्टॉपिंग. Correct. Distribution एडरसन आ गया. Yeah, I don't know, man. Again, people who are watching it with audio, आप बोलिए आप कैसा है stadium atmosphere? I think City fans have also said it's kind of surprising, looking at a full, jam-packed stadium. Yeah, that's what it is. Let's be honest, for City, it's one of the biggest ties in recent times, along with the Champions League finals जो था last season, right? So I can only expect. I know they played Real Madrid 2-3 times in last 7-8 years, लेकिन I think semi जो था 3 साल पहले उधर, and that was COVID time में you didn't have kind of people. I think it was over two legs, split over 6 months if I remember right. Yeah. That was round of 16. Sorry. So that was not ideal. Now under all this crowd, I don't know. So now that it's in City Stadium, I don't know, man. Real Madrid needs to do something, and they're already playing an attacking side. So you think what the physical element? Bro, physical element has always been a redundancy for Real Madrid. Every game they've started on a bad note. But second half में ही इनका कमबैक हुआ है हमेशा गोल स्कोरिंग के मामले में. तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि रियल मैड्रिड पहले कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाएगी. बट अभी देखते हैं आगे गेम बदलेगी. मुझे लग रहा है गेम जरूर बदलेगी. Yeah, let's see. मतलब again ऐसा नहीं हो कि they'll play an Atletico Madrid and like they're like okay half time तक 1-0 ले जाते हैं
then we'll kind of get one on the counter. 1-1 is a good score. That is a possibility. That has happened, especially जब away goals count होते थे. But the fact that नहीं हो रहे away goals, and that is something that I can see. Yes, certainly there will be interesting. City is in PSG और Chelsea. आज करीम का बाप भी कुछ नहीं करेगा. Well, देखते हैं भाई. मतलब again, it's too early to call out Real Madrid. You cannot. मतलब, to be very honest, हम देखे थे यार Chelsea fans. Trust me. Carvajal, man. But I'm pretty sure Real Madrid fans will be like, भाई तेरा एक ही जॉब था उस मोमेंट में और वही हक दिया तूने. Ankit bhai, if Real don't get past through City, do you think it will be fair to sack Ancelotti by saying he was interim coach? Oh man, very very harsh Aditya, बहुत ही harsh है मेरे ख्याल से. La Liga will जीतने वाले भाई. La Liga, he'll be the first manager, right, to win the first the top 5 leagues ever. So I think history is created. Ancelotti की tactics are again more pragmatic, but at the same time आपको देखना पड़ेगा उसी के अंडर आप PSG और Chelsea को भी डिफीट कर चुके हो. So I don't think वो सैक करेंगे to be honest, but obviously you'd want to go for glory. तो ये मैच बहुत क्रूशियल है आपके लिए जीतने के लिए. आई थिंक अगर फाइनल तक पहुंच गए तो डेफिनेटली सैक नहीं होगा. एंचेलोटी को नहीं करेंगे इसलिए सैक. ही इज नोन द ईथोस ऑफ द क्लब, तो उसको सैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. राइट. अच्छा, बाय द वे यार, मैं देख रहा हूँ काफी सारे वोट्स आ जा रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे. और लाइक से ही बढ़ेगा यार आगे स्ट्रीम, क्योंकि लाइक्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोग होंगे एंड देन वील हैव मोर डिस्कशंस. एंड ऑफ कोर्स होपफुली आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी पूछो व्हेन यू वांट टू काइंड ऑफ स्पीक, बिकॉज़ यस एब्सोल्युटली एक चीज है मेरी स्ट्रीम में जो थोड़ा कंप्लेन होता है, आई ट्राई टू टेक ऑल द कमेंट्स, लेकिन जो भी मैं नहीं ले पाता हूँ इन रेगुलर स्ट्रीम्स, वॉच अलोंग इज एब्सोल्युटली ग्रेट, काइंड ऑफ एक्सक्यूज फॉर यू ऑल टू आस्क क्वेश्चंस. And hopefully you'll have many people. Again, when I tweet here, hopefully you guys can just retweet. It's a part of Karim master plans. Okay. सारा वर्ल्ड would respect and PSG रिवेंज का नाम पे पेल कर चला गया और पता चला जाएगा. Well, Karim Benzema 7 knockout goals. Uday, मतलब where would you place him historically? मतलब again this season तो no doubt he's been probably the best striker on form. लेकिन हिस्टोरिकली कहाँ डालोगे करीम बेंजेमा को in terms of just what he does in Champions League? Historically तो he should definitely get into the Hall of Fame also, to be honest. जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रही है सीजन और सीजन, एक दो सीजन हाँ इंजरीज. अरे यार गोल, अरे नो गोल हो गया. That is another mistake. भाई Real Madrid fans. मैं seriously I am creeping myself, मैं Man City को predict कर रहा हूँ ना बार-बार. Literally I'm like telling let's see, I don't. लेकिन ये मिस्टेक 100% मिस्टेक था. I saw Gabriel Jesus डिफेंडिंग, ये अलाबा की तरफ से बहुत ही गलत डिफेंडिंग थी. क्या कर रहा था अलाबा? क्लियर क्यों नहीं किया बॉल? गाब्रियल ने टर्न ले लिया और गोल मार दिया. अच्छा, फोर्डन एक्चुअली अगेन नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल राइट विंग, आई थिंक इट वाज रोड्रिगो था क्या? कौन था पहले? नहीं, जिनचेंको ने पास दिया. नहीं जो फोर्डन बीट whom? फोर्डन बीट Eder Militao, I think. Militao, right? And Alaba, I don't know, very casual attempt, man, by Alaba. Very casual. Right. Very casual there. Malab, I don't know. That is like, I don't know what to say. City fans, congratulations. Abhi to yehi bol sakta hu. 2-0, not the end of the world. If you still Real Madrid fans will say that हमें चाहिए एक goal before half time, नहीं तो I can see a cricket score. That's how it's going towards. Why is Cancelo not playing? Yes, he's suspended. He is suspended for the first leg. He's the only one suspended. दोनों टीम से, और no one is on a suspension either. That is why they took Rudiger. लेकिन I hear you absolutely. लेकिन यार मुझे लगता है ना प्रॉब्लम ये, हम एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहे थे ना रिसेंट वॉच अलोंग में. It's about closing down. For me, the fact that the ball Gabriel Jesus को, that itself was a question mark. That shouldn't have come. It was basically the right side of Real Madrid, which was kind of at fault first, and then Alaba, right? Uday? Totally, I agree with you. Schoolboy defending outside the box, schoolboy defending inside the box. ये Real Madrid से expected नहीं था. This is all nerves and pressure. Benzema को देख लो, his face is evident enough to tell everyone that okay, he wants the team to buck up. उसने बोल दिया कि भाई आगे चलो आगे, बहुत हो गया. Wow, Ancelotti को मतलब पता नहीं, it's very rare that we can see Ancelotti emote. बहुत ही कम होता है, except for his eyebrows, I don't see anything moving generally. अभी वो बंदा literally चल रहा है, मतलब he's doing a sari on the sidelines.
If you guys remember what Sari was, obviously he was a chain smoker. Maybe that was the reason. लेकिन हाँ, he used to get nervous. And talk about nervous. Uday, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं? So Sari had initially told, right, that Christensen, again Chelsea player, who's Christensen, who's become Barca's son. He actually used to get stomach problems before every game because of jittery effects, right? So very interesting. Though it's argumental, but still, do you think Luis Suarez Esprey was a better striker than Karim Benzema? Because he was at his peak when La Liga had Messi and Ronaldo. Debatable. Very, very difficult. मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लुइस सुआरेज का जो शॉट टेकिंग एबिलिटी एंड द रनिंग बिटवीन द लाइंस वाज बेटर आई थिंक देन बेंजेमा ऑन व्हेन ही वाज एट हिज प्राइम. अगर आप देखो लिवरपूल में जो खेला है वो, उसके जो गोल्स आए हैं बहुत जबरदस्त गोल्स थे वो. बेंजेमा के भी गोल्स बहुत जबरदस्त रहे हैं थ्रू एंड थ्रू. लॉन्गेविटी देखो, बेंजेमा ने ज्यादा बहुत सस्टेनेबल है बेंजेमा. ऑब्वियसली अभी तक वो परफॉर्म कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी बेंजेमा की है. बट they're on the same level. It is very difficult to, bring one person below another. मेरे लिए it is, in fact, I would be disrespecting one of the players if I actually start comparing them both. इन दोनों को compare नहीं कर पाएंगे, दोनों एक ही level पे हैं. एडिसन को देखा अभी टाइम पास कर रहा है वो, लिटरली टाइम पास कर रहा था बॉल पे. दैट इज व्हाट एडिसन इज, मैन. लाइक एडिसन इज लाइक, मैन, I don't know what to say. But again, like, we have to, again, I know, sorry Real Madrid fans, अभी के लिए तो यार, I don't know, as a champion of Europe, this is what I would do to Man City right now. ले लो. I think it's there for the taking for sure. Like, again, it is one side, kind of traffic, man. One way traffic, totally. Full photo. And again, bhai hak diya. What is that? It is a simple cross. I think very feeble cross किया Phil Foden और अलाबा पता नहीं. I think Uday, can it be the Rudiger thing? Because Rudiger आ रहा है, अलाबा is like, oh, मुझे ऐसे भी लेफ्ट बैक खेलना है, जानबूझ के नहीं. Obviously, it's Champions League semi-final, but subconsciously, maybe in the last 48 hours, he's been thinking about his position at Real Madrid. Possible, huh? I think this match is more of him not being confident. I think confidence कम लग रहा है मुझे इसमें. नहीं तो अलाबा is a good defender यार, to be honest. वो सेंटर हाफ में भी अच्छा खेल लेता है, इतना फंबल नहीं करता वो. Correct. And you know what is the difference I feel? मतलब again, अगर आप देखो ना modern football, and that is something that I would commend Pep Guardiola and Phil Foden for that. Most of the teams क्या करते हैं, left side में they play a right footer who's got to cut in. ठीक है, तो आजकल के center halves, they are by default, they are knowing कि किस side से आने वाली ball, they are not too strong. So left center back will be usually strong on the left foot. लेकिन for this game, I actually won't be surprised if Ancelotti would be swapping them too. Let Alaba come as right center back and Militao come as left center back. क्योंकि I think Foden is cutting. So crosses ऐसे आएंगे, from basically your far line to inside. It will be basically back crosses. So वो बहुत ही कम है. Robin क्या करता था? I should remember Uday, when he started at Chelsea, when he started at Bayern, later on only किया था. Even Real Madrid में वो करता था. Real Madrid fans would remember that, right? Right. 1-2 goals out. अरित्रा क्या आप सिटी फैन हो? मैं तो सोचता था लिवरपूल फैन हो अरित्रा for some reason. नहीं, I think Aritra is a Barca fan. He asked me to do a Barca show. मैंने यार, yes, Barca show भी करना है. I don't know. Let's see. We'll probably do a Barca call-in show. I know a lot of Barca fans in the house होते हैं. And एक हफ्ते से again people out there who might not see La Liga content for the last 1 week only, जो मैंने proper शुरू कर दिया था beginning part of this year, because of the fact that मुझे काफी hate मिला है after Real Madrid loss. तो just अरे भाई Vinicius, nice run, and he kind of got in a shot corner है मेरे ख्याल से, right? अच्छा, I think Uday is lagging by just a couple seconds. Alaba giving Varane vibes. And again City, Aritra. City के साथ ही Varane ने किया था mistake. That's a good point. Loudmouth जी थोड़ा तो फट रहा है ना भाई. City Liverpool तो रोज का है, मतलब आज का नहीं. मेरा फट नहीं रहा है, लेकिन मैं देखो, मुझे रिलेंटलेस फुटबॉल नहीं चाहिए ऑपोजिशन की तरफ से. तो इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर मी अगर रियल मैड्रिड आ जाए, क्योंकि आपको पता है सिटी ने क्या कर दिया. लिवरपूल भी ये कर सकती है लिवरपूल भी. तो अब पता नहीं, अब देखो क्या होता है. सिटी ने 1-2 गोल आउट हो दिए. यू विल हैव टू से गुड बाय टू द फर्स्ट लेग. I don't know, just like kind of putting a neutral opinion quickly Uday, because Advay ने बोला है.
देखो इन अ फाइनल ना, मतलब टू लेग सेमीफाइनल में फिर भी आप बहुत स्ट्रांगली प्रेफरेंस करोगे. इन अ फाइनल आई डोंट थिंक इट इज इवन फेयर टू हैव अ प्रेफरेंस. इट इज Right. रियली दो 90 मिनट्स, वो 70 मिनट या 90 मिनट वो वाला सीन है. ठीक है, वही है. और फॉर मी इट्स अबाउट विलारियल राइट नाउ, एंड वील टॉक अबाउट इट. बाय द वे पीपल, या वी आर लाइव टुमारो एज वेल 8:30 बजे, so do join us. We are having a couple of Liverpool fans in the house. Uday, I don't know man, मतलब I know अभी काउंटर कर रही है सिटी on the other hand, लेकिन quick call on Liverpool Villarreal, like वहाँ पर क्या है, मतलब danger element for Villarreal for you? जीत जाना चाहिए लिवरपूल को वैसे तो. Villarreal will give a tough fight, very tough fight. As long as we are not fumbling, as long as we are good on a day, I think it will not be a problem for us to win over Villarreal. Villarreal can attack us on a counter, but I think Gerard Moreno, their main talisman, is out. So it'll be tough for even Villarreal to gather some strength ahead. So Liverpool के लिए it should be a comfortable victory, to be honest. Okay, I hear you absolutely 100%. और यार बाय द वे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बाय चांस कर दीजिए, एंड चेक आउट लाउडमाउथ चैनल भी, लाउडमाउथ फुटबॉल, सॉरी, उनका है डिस्क्रिप्शन में लिंक, सो प्लीज डू चेक इट आउट. लेकिन आई डोंट नो मैन, मतलब टैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को. अभी तो लग रहा है कि यार इट्स वन वे ट्रैफिक टोटली. दे हैव टू, आई नो प्रेसिंग गेम एक है, maybe they have to just push on Valverde as well, and just kind of press from the front with 4 rather than 3 people. Is that too much of a risk? Will not be too much of a risk if they start pressing in four numbers, because even City are playing very calculatedly. ऐसा तो नहीं है कि भाग रहे हैं उनसे. Real Madrid are not in the game. Let's be honest, people, whoever's working, what is this? What is this back pass, going to basically goal post पे मार रहा है, यहाँ कोटवा not able to kick a ball. As in, I am no Poor defense. words. Again, it pains me to say it, man. Chelsea lost to this team. I know it's football. ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन होता है वो. It just kind of comes back to memories. नहीं. Okay, as a neutral fan, which fixture you prefer, Liverpool versus Real or Liverpool versus City? अच्छा. Putting it on paper, आदित्य, मैं न्यूट्रल हूँ. सच में बोलो एकदम, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ भाई, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ. उदय इज अ पार्ट ऑफ द पैनल. यहाँ पर अच्छा बढ़िया कॉर्न लेते हुए सिटी बाय द वे. अच्छा, उदय इज पार्ट ऑफ द पैनल. कल भी लिवरपूल फैंस आ रहे हैं घर में. यस, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस एज वेल ऑन द चैनल, और मैं आई विल नॉट स्टे बैक. आई विल टेल लिवरपूल इज माय नंबर 1 राइवल. आपने सुन लिया है तो आदित्य, और मुझे बोलने की जरूरत है? लिवरपूल इज माय नंबर 1 राइवल. That is because of the fact that maybe when I saw Chelsea from the 2000-2003 season mainly, week in week out वाला, उसमें basically that $15 million match आपको पता ही उदय जो हुआ था, that was against Liverpool. Then we had obviously those Champions League games, lots of them in fact, जो हुआ था goal and whatnot, the 4-4 Lampard, when he scored the penalty, lot of those moments जो हुए थे ना, Benitez, Mourinho They're fight. very close to my heart. Recently, even Liverpool winning the league after beating Chelsea 5-3, then Lampard and Klopp. There have been a lot of cheese. So, मेरे लिए it has just kind of accumulated. It has basically come here. Liverpool is my main rival, if really someone asks me. अरे भाई वापस से they are opening up, man. Midfield कहाँ है आज? Where is Modric? Modric नीचे है. Modric की पोजीशन ठीक थी, क्रूस ही गलती है, क्रूस ने छोड़ दिया था वो. अब चलो एटलीस्ट बैक पास कर दिया भाई, ठीक है, और ठीक दिशा में दिया बैक पास, नहीं तो अदरवाइज ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट. या विलारियल वेरी कॉम्पैक्ट, आंखें घिसनी पड़ती है उनका मैच देखने पे. वेल राहुल अल्बियोल और पाउ टोरेस की जो पेयरिंग है वो बहुत अच्छी है. इट इज अ वेटरन एंड अ यंग स्पोर्ट्समैन पेयरिंग, सो आई थिंक दे कैन बी लीथल ऑन देयर डे. बट लिवरपूल के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए. दे विल ड्रॉ प्लेयर्स आउट. लो ब्लॉक पे बैठ जाओगे, लिवरपूल विल ट्राई स्टिल ट्राई विद थियागो एंड अदर क्रिएटिव प्लेयर्स. कर लेंगे हम, वी कैन ड्रॉ देम इन. सी, इसीलिए मैं बोलूंगा, मुझे लगता है इतना कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि द फैक्ट दैट इतना ओपन कर दिया विलारियल. हमें देखा था यूवेंटस के साथ, दे टुक देयर चांसेस. आई नो एक ऑफसाइड गोल भी हुआ था, दे प्रॉब्ली शुड हैव वन 4-0. दैट वाज हाउ इट वाज द सेकंड लेग. सो फॉर मी दे आर हैविंग लो सेल्सो इज अ क्रिएटिव एलिमेंट दैट दे हैव, रिमेंबर, ठीक है. तो एलिमेंट है, और आई थिंक डानी परेहो इज ग्रेट. वी विल डिस्कस इन डिटेल. मैं कुछ कल के लिए भी रखना चाहूंगा, लेकिन वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन डिटेल फॉर श्योर इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स. By the way, under Ten Hag, you think David De Gea will get a chance to become regular starter? Because Ten Hag has that Cruyff philosophy and he wants ball playing goal. But yes, absolutely. मतलब
मैंने एक्चुअली अंशुमान मेरे फ्रेंड से बात की थी जो यूनाइटेड फैन और कंटेंट क्रिएटर है. अगेन उदय, many United fans are calling for Henderson, but can you really drop David De Gea? I know Joe Hart की थी सिटी के साथ, सिटी की थी Joe Hart के साथ, right? Because of how Pep played. Do you see that happening right away, or what's your call? I know he will prefer a ball playing keeper, but David De Gea has been there. He's been a lifer for United. He's a loyalist. So I think looking at his performances, I think he will definitely put him ahead in the first couple of games. But if he's got his own plans of getting a keeper, yeah, Dean Henderson is a much better ball playing keeper than De Gea for sure. So I think Dean Henderson को start करेगा. But it all depends अगर उसको अपने build-up keeper से शुरू करने हैं कि नहीं करने हैं. तो इंटरेस्टिंग. हाँ, मतलब फॉर मी मे बी आई एम ओल्ड स्कूल यार. मैं तो बोलूंगा जस्ट कीप थिंग्स व्हिच आर वर्किंग मैन. यू नीड 1000 और चेंजेस चाहिए. आप ऐसा जरूरी नहीं कि 11 के 11 चेंजेस करो. दैट विल बी टू मच आई फील. एंड डेविड डिया इज अ कैप्टन ऑन द फील्ड इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप. So I would keep him. But Pau Torres to Chelsea, like I think Uday said about it, I think Pau Torres to Manchester United भी हो रहा है, from what I hear, depending on Maguire's future. यहाँ पर वापस मारेस कट इन करने वाला. वो नहीं किया भाई कट इन, चलो. लेकिन हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग लिंक्स हो रहे, मतलब नो कोइंसिडेंस. मिनट रूडिगर का ऑफिशियल हो गया. टुकल भाई साहब बोल दिए आफ्टर वेस्ट हैम गेम दैट कुछ दिन पहले ही बोल दिया था रूडिगर ने जा रहे हैं. It was very clear. Now the fact that we are getting millions and millions of players being linked to Chelsea. Guardiola, मैं सुना हूँ कि that is the closest link. Guardiola जो है, who plays for Leipzig, he played in the Euros by the way. Croatia आप लोग देखे होंगे. He is a pretty decent player. He can play left back, he can play left centre back. But again, we don't want a Malang star, but he's much better. Come on. I don't know why today's real team is looking exactly the way they played against Barca. The midfield is looking, yeah, exactly midfield for me. भाई. ओ यहाँ पर गोल और रे भाई ऑफसाइड. सॉरी ओवर रिएक्शन हो गया अंकित का थोड़ा. नहीं बढ़िया रिएक्शन था. अरे पीपल इन द चैट आप भी बोलिए यार. मैं स्पॉइलर तो नहीं दे रहा ना. आई होप समवन इज वाचिंग ऑन टीवी एटलीस्ट. मैं टीवी में देख रहा हूँ तो मे बी आई माइट बी अ फ्यू सेकंड्स आगे. एंड ऑफ कोर्स YouTube थिंगी आल्सो, सो आई माइट बी अ फ्यू सेकंड्स आगे. बट अगेन एज आई ऑलवेज से, लाइक द स्ट्रीम, टेक दैट पोल. There was a mistake here coming from City, लेकिन luckily offside हो गया. But good cutting. I mean, Benzema से positional presence is good Benzema की आगे, तो I think it was a good one. Wasn't that a high challenge from De Bruyne? Let me see. I haven't reached. और Mahrez with the right footer. That should have been a pass back. That should have been a cross back. Foden को भी I think he missed it. But again, I'm happy. Please, यार, टाई को बंद मत करो. I want a Real Madrid goal. Now, I'm supporting Real Madrid, everyone, just so that I get a good game to watch. That's my main reason. Real Madrid Barca, उनकी मिडलाइन बड़ी वो लग रही है, मतलब आउट ऑफ सॉर्ट्स. दे आर नॉट एज कोहेसिव एज दे शुड बी. ऑब्वियसली सिटी का टेम्पो बहुत हाई है. इंटेंसिटी मैच नहीं हो पा रही है. इट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर इंटेंसिटी नॉट मैचिंग अप टू सिटीज. सो दिस इज द प्रॉब्लम. दे आर आउट ऑफ पोजीशन. Exactly. नहीं, लेकिन again, it's about City also taking the foot off the pedal. I think easily, in a normal situation वो better pass होता. मतलब it's very strange for Mahrez to do that. लेकिन ये question Elias is asking, who will win prime Barca under Pep versus Pep City 2017 team? Prime Barca. Any day. मतलब that is the answer. I'll give it to you right now in writing. Again, it's tougher to win league and all that. Absolutely agree, bhai. मतलब you cannot amass so many points. 100% agree. लेकिन I think prime Barca, I as an opposition would pay to watch. You know what I mean? Yes. So that's the difference. But who will win? Again, there are different ways. Guardiola is amazing. नहीं बोलूंगा यार. Leipzig has not really uprooted trees defensively. लेकिन they have done better. They have got a good deal यार. Upamecano गया तो I think they have got a good deal. Upamecano has regressed massively from this season. So that is why we signed Konate as well. Konate was performing better than Upamecano, to be honest. Sometimes English media has a certain hype also around many players. So I think, yeah, scouting गलत करते लोग. 100% यार, वहाँ तो मैं एग्री करूंगा. मतलब कोर्टवा को देख लो भाई. मतलब again, Real Madrid fans will hate me saying it. Courtois was hyped. I'll be honest with it. He was nowhere close to how good he was, but he has become that good. वो मैं जरूर बोलूँगा. यही तो सिटी एक्सप्रेशन. क्या गेमिंग करते हो उदय? हाँ, मैं करता था. अब नहीं, प्राइम नहीं है. उमर, मैं
मैं तो वही मतलब मैं याद है मुझे एमबीए के दिनों में मतलब लिटरली बैक बेंच पे बैठकर फीफा खेलो पूरे दिन, नहीं करना था मुझे। पता यार क्लास में क्या होना है, मतलब दैट वाज माय थिंग। लैपटॉप में असाइनमेंट के बोलकर वी आर डूइंग दैट। मैं तो फीफा, लेकिन हाँ आजकल इतना नहीं हो, बट गुड टू सी अदवे, मतलब यू आर एंजॉयिंग समथिंग मैंने नाइस। लास्ट फीफा आपको बताऊं कौन सी खेली थी, मतलब अरे खेली यार है मिस्टेक। बट फीफा 14 खेली है मैंने रेगुलरली लास्ट। अरे भाई मैं 19 खेला हूँ, फीफा 19 अभी भी खेलता हूँ थोड़ा बहुत। ओ लेकिन करेंगे भाई, अरे चैट में आप बोलिए भाई, वुड यू लाइक मी टू डू फीफा स्ट्रीमिंग एज वेल। मैं सोचा यार वो तो हर कोई करता है, मैं यार थोड़ा और लाते हैं सम एलिमेंट, बट एनीवेज आई वुड लाइक टू ट्राई फ्यूचर। यहाँ पे गोल होने वाला लग रहा है, केविन डी ब्रुयने विद अ थ्रू बॉल, और यहाँ पे मिस कर दिया फोडन भाई साहब। दैट वाज अ मिस एंड हाफ man, अगेन। so many chances, so He should many have chances. crossed back. He should have crossed back for me. Again वो कट बैक करता ना तो डी ब्रुयने वापस था और डी ब्रुयने मारता गोल। Pep will be fuming, 4-0 हो जाते हाफ टाइम तक। अरे स्पेस था यार, डी ब्रुयने वाज ऑन द रन एंड देयर वाज नो वन। He should have just put it in the center. But bro, good pass by De Bruyne यार, फोडन की गलती है, he should have Brilliant. converted it. That is the difference. That is the difference. So again, people, मैं हर एक लिटरली हर एक, अब तो लिटरली एक हो गया ना, रूडिगर हर एक गेम में एक शॉट लेता है, लॉन्ग शॉट लेता है। वैसे हर एक स्ट्रीम में बोलता हूँ, De Bruyne not getting linked to Real Madrid Barca as much is the strangest thing in football that has ever happened for me. Yeah. Very very shocking for me. He is probably he is a generational player and a half. For And I sure. have no qualms about saying that. The biggest regret of me as a Chelsea fan is letting De Bruyne go. And Jose Mourinho, as much as I love him, I almost hate him for that one reason. And I'm real in that. अरे गोल होने वाला है, अब नहीं यार। Ankit, बढ़िया क्रॉस, David Alaba, actually was there in the center, almost got a goal in. Karim Benzema supplying the cross, or David Alaba with a glance which goes Ankit, just wide. you Oh see this? भाई, अभी भी 30 मिनट्स के अंदर सिर्फ करीम बेंजेमा और विनिशियस जूनियर ने कुछ काम किया है, वो भी आगे। They got the ball twice when City were trying to get on with the ball, बस, और कुछ नहीं हुआ है रियल मैड्रिड की तरफ से, और कुछ नहीं हुआ है अभी तक, so which is a little astonishing, but they yeah. should get back on track. They should ideally. नहीं, there have been chances though. मैं आपको याद है तो there is one Vinicius Junior, I think they made a mistake. Vinicius Junior took a shot, वो कॉर्नर गया, और अभी ये वाला भी I think चांस था, मतलब हाँ अगेन वो हाफ चांसेस ही है, Half chance. but again Man City, that was what will make the difference. You have to take them, man, if you're able to. Man City has had 4 big chances. I mean, 4 big chances. 2 convert कर दिए, 2 नहीं हुए convert. Correct यार। Guardiol stats यार for me again my defensive stats ज्यादा देखना चाहूंगा। यहाँ पे गोल होने वाला है, Zinchenko wide. Although City is dominating on the score line, I feel that this is a decent game because काफी mistakes कर रहे हैं दोनों side. So for a neutral, it's not a bad game to watch. Okay, interesting. I don't know, man. This one, again, I know that a lot of names are coming in. You can talk about itne sare scouted names, लेकिन again, I think Sangare is kind of very very young. Again, PSV के लिए जो किया है, great, brilliant. लेकिन again, doing at PSV versus doing in the league is totally different. I believe he's a bit kind of young in terms of the experience, lack of experience. I don't know. Lamar, I'm not pretty sure about him. Let me see what are Lemar his is pretty good on the ball. He's got a good ball control. Okay. But again, I think it's a very tough call to predict right now कि कौन United में fit करेगा, क्योंकि United में to be honest अभी कोई player fit कर ही नहीं रहा है apart from Cristiano Ronaldo. उनके सिस्टम में अभी देखना पड़ेगा Ten Hag what sort of a system he deploys. देखते हैं उस हिसाब से how will they get onto the tempo. पहले तो they need to build on their endurance. They're struggling on their stamina part. They need to build an endurance so that they can match the top teams, Chelsea, City, Liverpool, even Brighton for that matter. Okay. करते भाई अद्वै, तो होपफुली समर में थोड़ा टाइम मिलेगा तो अपना ऐसे भी हुएमआई का बाकी है। उदय, आई थिंक आपने वॉलंटियर किया है ना हुएमआई के लिए, आप भी आने वाले हो, राइट? किसके लिए? You have हुएमआई क्विज, you also volunteered, right, for the हुएमआई quiz that I do? No, I haven't volunteered, but I know what you're talking about. Yeah. So again, that's a live invite everyone. I'm inviting Uday basically. So For you are sure. one of my contestants for the future, ठीक है? For sure, I'd love to come. गोल हो गया यार, बेंजेमा, वो भाई साहब, करीम बेंजेमा out of nothing gets a goal.
out of nothing gets a goal, man. Karim Benzema in the house, man. People, I told it, one goal, that is what they wanted, and that was a brilliant timing. I don't know, man. Karim Benzema, I have to give you this, man. Karim Benzema, different element altogether. Ek, he just needs that 1 second, and he's got it, man. Best striker in the world, hands down. He has kept Real Madrid in this game after this goal. अगर Real Madrid defend कर पाए और wow, Mendy, I think it was with a brilliant cross, very good cross by Mendy as well. बोलना पड़ेगा, Ferland Mendy got a good cross, लेकिन Zinchenko at fault. Full back, दोनों ही full back mistakes करते हुए उदय भाई, I don't know if you saw the goal. Did you? I did. Wow. That was quite again masterclass from Benzema. I think this is a very tough goal to score. Very tough. What a game already, It's full people. goal. It's just half an hour in. We are having 3 goals. It is basically, should have been, you would say, possibly score line होना चाहिए था 3-2, but है 2-1. मैं तो ऐसा बोलूंगा, मतलब दोनों ही टीम चांसेस बनाए थे. Absolutely, yes. That is what Benzema is the one. Like Aditya has kind of Clutch player. मतलब मैं तो क्लच भी नहीं बोलूंगा यार. He's like basically he is a superb class player who just needs 1 second. You cannot kind of a fox in the box total plus and half. That's what I would say. Absolutely. Yeah. But let's see. Frankie De Jong rumors with United. अरे भाई नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला. क्यों छोड़ेगा भाई बारसा? उधर Frankie De Jong फिट करेगा यूनाइटेड की स्क्वाड में. सेंटर मिडफील्ड में भी हेल्प करेगा, आगे भी हेल्प करेगा. He will be a good addition in the United. नहीं, लेकिन ऐसे मतलब मुंह उठा के थोड़ी ले जाएंगे. मतलब एक वही गोल बच गया भाई. Rodrigo with a nice play, Rodrigo, and good. I think easy shot था, लेकिन I think Edison kind of parried it away. Good ball by Toni Kroos, by the way. Good ball from the team. And see, coming to transfers, a lot of coaches move. You cannot just move your favorite players all the time. You cannot play with the same 11 all the time. Fernandinho, Uday called it. Fernandinho is warming up people. I don't know whether injury है कि क्या. Fernandinho has to basically come on is what City is saying. Let's see. He's kicked it up. वही देखना पड़ेगा किसकी who will be getting out of the team. I don't know. Someone must be injured. Rodri was doing a good job for City, to be honest, but I don't know. No, John Stones. He's not 100%. John Stones is not 100%. Right. Lekin again, already Zinchenko making a mistake, you would say, a little bit slow for that Benzema goal. On the other side, Real Madrid right back wasn't great, right wing rather. Now John Stones moving. I don't know, man. It's been a story of fullbacks either being injured or making mistakes. That's been the story of the half till now. Uday? Yeah, I think they made plenty of mistakes, but as I told you, Real Madrid have enough to come back at any point of time. Unko 2 chances de do, they will convert them also. So they are a team with a few chances. They just need a few conversion, chances for conversion because they are very clinical. City, dekh liya, story of the day. Foden missed a chance. Mahrez missed a chance again. So 2 chances उन्होंने miss कर दिए. 4-1 हो सकता है यहाँ पे. Absolutely, 100% agreed there. Now again, ये क्या है यार? क्या हुआ? कोई नहीं. City badly missing Walker and Cancelo. Yeah, मतलब that's very clear. अभी क्या खेल क्या रही है भाई City? मतलब let's see what are they actually playing. Anyone in the chat आप भी बोलिए. I think they might have gone 3 in the back, as Uday kind of referred to that. There is a possibility, nahi Uday? I think that is what I'm guessing it's the case. Unless if Fernandinho is on, I think maybe he can play as a centre half as well. I need to see what is happening at the back. अभी देखा नहीं है मैंने. अच्छा नहीं. Fernandinho right side खेल रहा है. Right side खेल रहा है. Back 3 ही होगा. नहीं, right side तो खेल रहा है. I think right midfielder खेल रहा होगा. Maybe back 3 with him being a right midfielder, right winger. नहीं, he is a right back only. I think. Yeah, back 3 में हाँ, he's a right midfielder. You're right. So interesting. अरे आराम से भाई अद्वै, आराम से करिए भाई. चलता है भाई, थोड़ा बैंटर चलता है. लेट्स बी कूल अबाउट इट. इट्स ओके. मतलब कोई बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा. Yes, but there is a line to it, and that's why I'm model, and I respect that, and I thank you for doing that. लेकिन हाँ, let's take it a little bit lenient. And again, everyone is welcome, but yes,
we have to kind of be careful of what we're speaking as well. City badly missing Walker and Cancelo. Please answer my above comment. यार देख ही लेते यार. Bad thing about United's club is too big for any manager to get any time of to rebuild. New manager coming always has to mend old manager's mistake. That too in too little time. I won't disagree with that. Is there anything to disagree about it? To be very honest. Sorry, I didn't get you there. I'm very sorry. नहीं वही है basically क्या है ना what Alias is asking or saying is that the bad thing about United club is too big for any manager to get any time to rebuild. मतलब इतना बड़ा है कि यार आप basically you have to kind of make sure that जो भी पुराना mistake था you have to keep fixing it and you cannot kind of start from scratch again. It is not too big for any manager. In fact, if it is too big for any manager, it should be as comfortable as it gets. अगर क्लब जितना छोटा होता है उतना मुश्किल भी होता है क्लब को रीबिल्ड में, क्योंकि आपको प्लेयर ज्यादा चाहिए होते हैं. यहाँ पे तो प्लेयर आपके लिए हैं, इतनी क्वालिटी प्लेयर है. It is just that they are not setting into a sync, and it is not the manager's fault again. I think हो सकती है, it is very subjective, but at the moment we need to look at what Ten Hag can do, and also when Ralf Rangnick spoke about United का इतना influence नहीं है मार्केट में. That is also a cause of concern. Wages इतनी दे रहे हो, पॉल पॉगबा को 4,500 pounds में आप साइन कर रहे हो फिर से, trying to sign him, which he's not going to. Mohamed Salah is playing on 300, 290. I mean, you know the difference. Discipline is out of sorts. Pampering is being happening. I mean, at United ever since Ferguson has, benched down from that pedestal. I think United have been symbolic in terms of player management and even staff management. काफी lenient रहे हैं United. Yeah, fair enough. They, that attitude on the pitch when they're even losing or drawing games, they're laughing on the pitch. McTominay laughs when he takes a tackle or two. It's a very attitude is not right. I agree with Roy Keane sometimes that vigorous, vicious, attitude is not there in the players anymore. Wayne Rooney तक भी थी. इब्राहिमोविच में तो अलग ही attitude था. 37 goals मारे उसने, single handedly उसने यूरोपा भी जिताया इनको. तो Yeah, exactly. So like Uday is saying, like basically they need that discipline element to kind of get them motivated. मतलब Roy Keane, पता नहीं यार Roy Keane, मतलब I always thought he'll be a great manager, लेकिन वही है, he's nice shot there. Gary Neville, Paul Scholes, Roy Keane सब flop हुए हैं. सब flop हो गए, exactly. Paul Scholes तो पूछो ही मत, मतलब again no pun intended, लेकिन the fact being, और ये quote कर रहा हूँ मैं, he said that I think in the back four United's defense is better than Chelsea's. Come on, man. At least for this season, no. Yeah, that's absurd. It was very, very casual statement. But again, it's their opinion. That's one thing. But nonetheless, I think Roy Keane still had a decent career with Sunderland, to be honest. Average खेल रहे थे वो उसके अंदर, but at least better than what Scholes and Gary Neville did. So. Yeah, 100%. Agreed. I think City might, I don't know, man, with Stones not being there, और अभी चेंज हो गया ना फॉर्मेशन, मतलब दे माइट एक्चुअली कीप मोर ऑफ द बॉल, आई फील, बिकॉज वो एक 5-man मिडफील्ड हो गया ना, तो इन अ स्ट्रेंज वे इट विल हेल्प सिटी नाउ, आई फील दैट्स द वर्स्ट पार्ट. इफ यू आर रियल मैड्रिड फैन, इट इज सीडीएम तो है ही नहीं, फ्लॉप कहाँ से होगा. ओके भाई, वी हैव बीन लिविंग इन साफ शैडो टू लॉन्ग. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड सर एलेक्स इज वन एंड ओनली. What he has achieved can't happen again. Exactly, it will require a new era to work rather than be in the past. Yeah, so again, I don't think anyone is comparing with Sir Alex Ferguson. I don't think anyone. Let me reiterate my statement. We are not trying to compare anyone with Alex Ferguson, but at least produce a performance somewhere near him. Some momentum should be there in the team. Your performances aren't good. अगर performance अच्छी नहीं होगी तो points कहाँ से लोगे? काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल के बंदा लीग नहीं जीत सकता. वो टाइम गया when Jose Mourinho used to play counter attacking with Chelsea and he used to win titles. That time has gone. Even Chelsea plays attacking football now. Every team mostly attacks and presses. Look at the lower leagues: Aston Villa, Southampton, Leeds. Every team presses. United doesn't even resort to the basics. That's the problem with United. Okay, Adway saying similar with Arsenal, though problem Saf and Wenger left big legacies, though tough to forget. यहाँ पर अरे भाई ये क्रॉस पे क्रॉस आ रहे हैं. यू नो व्हाट, इट्स वेरी क्लियर इन द गेम दैट दोनों ही टीम्स जान गए कि दोनों के फुल बैक्स इज द वीक स्पॉट इन दिस गेम. करेक्ट. ओह जेसूस, ओ भाई साहब, व्हाट वाज दैट? ही डिड अ मेसी और व्हाट? ही डिड अ प्राइम हजार्ड, मैन. Militao was like just turned Militao, man, easily.
Gabriel Jesus ko actually taking him out will be a good option. I don't think selling him to Arsenal, it will be good for Arsenal, but he's a very good fluidic player as well. You know, he on his day, he can decimate नहीं teams. यार, सिटी का क्या प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम है. Did they really need Grealish? No, not really. वही है, मतलब वही है. They have too good a team in Yeah. terms of league football, और हर सीजन में एक फ्रेशनेस डालनी पड़ती है. That is the rule of football. Yeah. Whether they like it or not. So they need some freshness. That's the only thing. आप बोलोगे यार, they might have won the league, they might have. Chelsea का we will win the league once Lukaku is here, and might have, should have कर सकते हैं, लेकिन यार what is working for them, why change it, right? So Yeah. I am a little bit surprised that these links came by and they are linked. मतलब linked क्या, मतलब almost लग रहा है कि हालैंड जाने वाला है City. So I am very very surprised. I'll be very honest with you on that. Well, please don't say bad about Mourinho. I feel bad. यार, Hey, no one Mourinho is was a legendary manager, man. obviously. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उसकी philosophy अब काम नहीं कर रही है, bro. बस ये He's बोल. a legendary manager. He plays dinosaur football अभी. मैं I don't think, मतलब again मैं challenge करने को तैयार हूँ यहाँ पर if there's a bigger Mourinho fan than me. But I'm telling it. But that is the reality of it, Uday. Yes, there are things which he needs to get better at. But I love Mourinho and what he does even today. So there are certain things, of course, you need. But हाँ, यहाँ पर यार penalty है क्या? अच्छा नहीं, free kick. Cruz getting I think he tripped Gabriel Jesus almost. So I think that's a free kick for City. I don't know, man. It's going to be a close one. Let's see how it goes. But for me, surely, if City get on the next goal, I don't think it will be as close. मुझे लगता है Real Madrid has to get the next one. Yeah, I think. Look, momentum should have actually fallen in their end, but Real Madrid just again, like I said, एक चांस चाहिए, चाहे डोमिनेट कर रही है नहीं कर रही है, एटलीस्ट दे कैन टेक दोस चांसेस, सो यू नेवर नो. अभी लेट्स सी व्हाट सिटी डज. मेरे स्क्रीन पे तो अभी फ्री किक्स लेनी है, आपके आई थिंक ले लिया होगा. Yeah, ले लिया. So that's why I didn't react much. कुछ हुआ नहीं है. लेकिन again, yeah, people, come on. I don't know, like I know a lot of people are streaming today and maybe people are coming and going out. But again, people who join the stream, आप बोलिए. Half time होने वाला है. It is 2-1 to Man City at home. Probably I would say on paper it's kind of 50-50 अभी भी, क्योंकि Man City at home है. It's just half time. लेकिन looking at the game, City should have been much ahead. That's the reality of it. Oh, Fernandinho breaking a play. Oh, यहाँ पर you needed a Haaland, you would say. No one was there in the box for City. मेरे में भी आएगा. Yeah, that is the exact moment I think where they need a Haaland. Someone will. I don't know, man. People, again, if you have not liked the stream, please like the stream. और आप अगर मुझे फॉलो करते हो सोशल मीडिया में, do follow firstly on Almighty Blues FC. It is Almighty Blues FC on Instagram, on Twitter. I have tweeted about it. If you guys can just share, my tweet, it will be fantastic, so that more people come. क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ उससे होगा नहीं. The word of mouth should spread by you all. और आप लोग देख रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है. आप लोग अगर फैलाओगे तभी चैनल फैलेगा भाई, नहीं तो नहीं फैलने वाला. अगर आप चाहते हो तो प्लीज करिए. It will really mean a lot to me. Certainly, आप देख रहे हो, literally we are live literally every day. Please tell me if that's easy. By the way, Benzema with today's goal at 40 goals in the season. Wow. Uday, Amazing. Is that for real? That was pretty surreal, man. Amazing. 40 goals. That is the next level, bhai. He has reached the goal personal record. Personal record, है ना? Wow, brilliant. So half time हो गया. 2-1. Uday. Yep. Let's talk about it. What do you? How would you sum up the half? Again, I think flanks they've been very weak, very prone to City's possession. I would actually not rate for Valverde that high. Valverde has done a okay job. Rodrigo as well was caught out in certain positions. That right flank has not been that lucrative. But I would say that Toni Kroos and at least Luka Modric tried changing the game with those long passes that they've एक-दो दिए हैं, वहाँ भी ज़्यादा नहीं दिया. Karim Benzema's, yeah, he is supposed to be spoken about and all applauds to him for that goal. He also tried taking City's defense out on 2 different occasions and he was falling deep as well to get out of the press. But to be honest, I wasn't really impressed with Real's half at all. Madrid का कुछ इतना कोई खास half नहीं गया. City ने at least
they've tried taking many chances, and they've actually shown up bigger than Madrid have in the first half. But what do you think? What is your prognosis? Yeah, मतलब honestly, like first few minutes में, like you said, it was all City, और फिर Real Madrid kind of came into the game. Obviously, आप दो goals पीछे जाते हो, then they'll come back to the game at some point. They needed that breakthrough, and that was Benzema has got. So it is a story of Real Madrid's season in Champions League, especially. They have gone on the back foot and then kind of come back. Almost, I think one person in the chat का live chat में actually joke भी किया था कि Pep's tactic will be do not score first, क्योंकि लिवरपूल Real Madrid वापस आ जाएगी. That is what it's been. लेकिन I think despite that, मैं बोलूँगा it was City's to win. City has been basically midfield dominate किए, proper dominate किए. No two ways about it. Really disappointed. Real Madrid की जो midfield है, especially Valverde आज जो खेल रहा है ना, Valverde is playing for a certain reason. He's not doing. मतलब मुझे नहीं दिख रहा Valverde. Modric, he's kind of the last man in defense and midfield. But again, has he been doing enough? Nahi. The ball has been going to De Bruyne. The ball has been going to Silva, Rodri. But that is what is happening. Or Mahrez cutting in again. आप बोलोगे first goal clear था for me that Mahrez should not have basically been allowed to take that shot. आपको पता है Mahrez when he cuts in, that is something that आपको पता है, he'll cut it and he'll shoot or he'll kind of cross. And if you are basically a left back of Real Madrid or if you're right back, those are a full back error है, clear error for me, not even a doubt about that. Second goal again, mistake by the right flank of Real Madrid. Alaba was literally sleeping. Alaba probably मैं बोलूँगा the worst player on the pitch, and I have no qualms about saying that. Courtois जो आप बोले थे, again I agreed. Me, a Chelsea fan, he's a snake. I agreed that he was the player for Real Madrid this season along with Modric and Benzema. He has been utter, I don't know what, not in the game. His kicks has not gone to the players directly. So Uday, I don't know, man. Benzema, superb. Maybe you can say that he's reached that GOAT level forever. Lekin I don't think वो expect करेंगे second half. Maybe City will miss those chances. I think easily. If I'm not wrong, Foden should have done better with that finish. Gabriel Jesus should have probably got that goal as well again. So, where are you at this? And with Fernandinho coming and Stones going, can they make use of it, Real Madrid? This is going to get tougher for Real Madrid, to be honest. Fernandinho आ गया pitch पे, John Stones जाना, it is actually a blessing in disguise in a way because Fernandinho will give them that defensive prowess. His positioning is the key. Even right now, he just came on the pitch and he's been acting as a wing back come right mid. That position is he's suiting that position a lot. So Real Madrid ka half, to be honest, it might sound very harsh coming in from a neutral, but it was a poor game by Real Madrid, man. Barring 1-2 chances that they showed, it was a poor game. And it is actually, this is not the sort of tempo that Madrid stars would expect from Real, right? Agar counter-attacking खेल भी रहे हो, at least seem a little fluidic, lucrative. Yeah. They were getting dispossessed from the right flank. Seems to be a problem for Real. They need to get out of a conundrum. They've hit a rut, and second half, I think again, like I said, Real आ भी सकती है, कुछ पता नहीं. पिछले 2 matches में यही हुआ है, UCL matches में. This is how they've defined their season. They don't come up with big performances. They come up with big chances. So I think Real Madrid, a team of a few chances, might come back into the match, and that is what I want. You know what? It's seeming like the City PSG match of last season. मतलब मुझे almost वैसे ही लग रहा है, and maybe even City Dortmund. So yeah, that moment is always there. By the way, shout out to Devils United. We were there on the channel. Great content there. We did a United Chelsea stream, or Devils United will be on our channel as well on Thursday. Right. Maisie, just a reminder. Hope to see you there. We have also Fahim in the house. So CFC Fahim and Maisie. We have a Chelsea fan, a Manchester United fan. That'll be fun as well on Thursday. And tomorrow, people do tune in for the Liverpool Villarreal preview at 8:30. But again, let's actually look at the benches that they have, the options. And again, people, आप बोलिए यार, आपके लिए कौन था the player of the half till now? Do comment in. Everyone watching, do comment. Put in the comment. And I'm hoping everyone has liked the stream by now. But just putting out what basically this website thinks. What more things that basically. It's basically been De Bruyne. I don't know, man. Again, scoring that crucial goal in the opener in such a big crucial game. Him and Benzema probably will define, man. And वो एक moment वापस आएगा, नहीं उदय? बिल्कुल आएगा. Because they're already in form. We've seen De Bruyne and Mahrez have been the best players till now. Jesus is doing a great job in stuttering their defense. So ये 3 player कम आएंगे. And pivot को देखो, Rodri has been doing a good job in controlling the midfield. He's
completely dispossessing Cruz and Modric. So Rodri is going to be key in the second half as well. Bernardo Silva as well. I mean, he wasn't a big show up, but at least उसने endurance दिखाई है pitch पे. At least एक जहाँ पे unit आपको चाहिए पीछे आगे चाहिए, he's been there. अरे वो दिखा रहे क्रॉस यार मारेस का, मैंने एक्चुअली बात ही किया था उदय से, लाइक अगेन पीपल जो लेट ज्वाइन किए यार, आप देखते हैं यार, हमने एग्जैक्टली वही टैक्टिक में बात किया था कि मारेस शुड स्टे वाइड, क्योंकि फुल बैक इज एन इशू इन दिस गेम एंड दैट वाज क्लियर टू सी. Mahrez was there for the first goal, and for the second goal again, that the pass to Jesus came on from Real Madrid right flank on the other hand, right? So दोनों ही flank weak है. Ederson has been poor, Courtois has been poor, so I think both the defenses making mistakes. Alaba probably the worst player on the pitch, so it's kind of strange that इतने सारे good attackers we spoke about, but Rudiger, that's the reason why Real Madrid are going for, and that's the reason हम बोले थे कि Man City missing defenders in this game will be a major kind of an opportunity, and that was happening exactly. Zinchenko, Cancelo would have played, Zinchenko wouldn't have played, and Benzema ने लिया वो chance. Benzema 2-3 through भी डाला, he's on top player for sure. Okay, Benzema आदमी सोच रहे, मुझे लग रहा है De Bruyne should be the player of the game till now, लेकिन Benzema probably second player, absolutely. We only may come back. मास्टर प्लान फरासत उदय, मैंने बोला था ना, मास्टर प्लान वही है, स्टार्टिंग मिनट में गोल कंसीड करना. इंटरेस्टिंग. राइट बैक इज कंसर्निंग मी एंड आल्सो एडिसन. If you look at this, Vinicius के पास opportunities कितनी आई हैं बंदे ने, he has taken only 10 touches in the first half, only 10 touches. Very lack, a few opportunities have come his side, and that too when he was attacking, at least एक बार उसने पास दे दिया, but he has not been able to dribble past a single defender till now. So Vinicius अभी तक काफी silent रहे हैं. Yeah, you can obviously say that exactly, but again, the fact that Vinicius kind of they're blocking the passes to him, Mendy got the opportunity, like Uday, वही आप बोलोगे, in that goal also, second goal, first goal for Real Madrid rather. So Mendy अगर नहीं मिलता space उन्हें, उनको क्यों मिला space? Because of the fact that I think Vinicius was kind of protected, and that's maybe worked for them. After watching Carvajal performance kidnap James from London, ले लो भाई, जेम्स वॉर्ड प्रॉविस को ले लो फरासत, नो प्रॉब्लम. ही इज इन साउथहैम्पटन दो, बट एब्सोल्युटली टेक हिम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट. आई हैव नो इश्यूज. ट्रेंड नहीं चाहिए. हाँ ट्रेंड यार, कम ऑन, ऐसे तो यार सब लोग बोलते हैं ट्रेंड इज बेस्ट, ट्रेंड इज बेस्ट. उदय इज इन द हाउस. उदय क्या बोलते हो भाई? डू रियल मैड्रिड नीड अ ट्रेंड नाउ और जेम्स? नो वन इज गोइंग, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. I think Reece James will suit them better because defensively he's a little more quicker. Trent will suit a team which needs more attacking output. Attacking assist वगैरह दिलवाने ट्रेंट ले जाओ. अगर डिफेंडिंग करवानी है तो आपको रीस जेम्स या काइल वॉकर जैसा कोई रखना चाहिए राइट बैक पे. Missing walks, yes, Walker has been missing big time. Walker and Cancelo दोनों ही. Zinchenko यार, he kind of gave that opportunity, like I said, the City miss good opportunity. हाँ मतलब I think वो जो Foden वाला था, he should have cut back. Maybe that was the thing, right? As he probably should have cut back again to De Bruyne, because De Bruyne was running on goal, no one directly in front of him. Liverpool के कोई player Madrid में नहीं चाहिए, कभी नहीं. Alonso Spanish था, exceptional case. Interesting, very strong statement by Farasat Ali. Any update about new owner? Yes, bro. So the thing is, they have been given an ultimatum about, I think कल दो owners present करेंगे final kind of thing that okay, this is what we are pledging for Chelsea. They are kind of proving their pledge, whatever they've done till date, or I think the next day एक और owner करेगा, तो potential owner, that is right, bidders rather. So तीनों bidders basically over the next 2 days will be putting their final things on the table, and technically by beginning of next week आप देखोगे we'll have a preferred bidder, or at least they will be knowing it, if not us. Yeah. ये हमारे प्लेयर लूट लो भाई, हम मर जाए. Exactly यार, मतलब we have become a selling club. City defense a big problem. Yes, City, I would say fullbacks alone यार, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा, defense in particular has been problematic. I don't think center half. It hasn't been a major problem. That was a very good chance. Benzema ही मार सकता था या Lewandowski, और कोई नहीं मार. That was the second. They just नहीं, जैसे Modric का हुआ था to Rodrigo. I know it was such a great pass, लेकिन it was a proper cross, and they just needed. It was not an easy cross. It was not a cross किया 5 meter cross किया, right? He gave a proper cross, or Benzema with his typical run kind of got ahead of Zinchenko and scored that goal. But Benzema can do that. Chelsea को तो यार over the 2 seasons he has done lots. After Klopp departure, Trent, Sergio Robert, are you talking about Sergio Ramos or Roberto. Sergio Roberto?
Roberto. Don't tell me the Barca है Sergio Roberto. क्यों भाई इतना बुरा भी नहीं है फरासत. Wishful thinking. You heard a Liverpool fan there, Farasat, just so you know. Who knows this stuff as well? Bernardo Silva is a gem. Yeah, you can say. Again, Bernardo Silva did very well, but yeah, maybe yeah, that's actually a good show. आपको एक बात बताता हूँ. I'll just see. Rodri, I spoke about him. He's completed 50 out of 51 passes. Laporte and Zinchenko passing has been pretty good from their end. If you talk about duels, Bernardo Silva, Militao का चलो ठीक है. मतलब he's been pretty average to be honest, but he did fumble once or twice. But apart from that, उसकी dueling काफी ठीक रही है. Jesus, De Bruyne, Rodri, any days they've stepped up massively. Toni Kroos is still trying. Toni Kroos try कर रहा है. He's had 40 touches on the ball. He's trying to do something, make something out of the game. Modric support नहीं दे रहा है. Valverde support नहीं दे रहा है. Real Madrid are literally dysfunctional at the moment as a unit. Yeah. सिर्फ वही Benzema पे they are dependent on Benzema and Vinicius ahead. I think Rodri should also support them on the right flank. कुछ तो चाहिए. They need to come up big time. They need to come up big time. I don't know people. By the way यार, big up पहले यार इस chat पे पढ़ने से पहले Rahul, big up Rahul भाई. Rahul, respect भाई. I know that you're studying. फिर भी you have come and that is dedication. Trust me. यहाँ dedication अंकित भी कर रहा है, उदय भी कर रहा है, Rahul भी कर रहा है. And again, every mod out there भाई, let's give up to Rahul man. Rahul big time man. I really respect you. And hopefully यार, again, like Rahul is saying, despite him being late for obvious reasons, let's actually get in the likes. We can easily triple the number of people watching. Come on, this is the most watched game out there. We need to have more people in. Come on, people. Second half will be a killer. First half का आप देखो, and that is why as a neutral, again, I know Adway ने बोला था rant मत करिए अंकित भैया and all that. The fact that I think I am just ranting because of the fact that the way the defenses have been and the chances have been missed. It was there for the taking. Again, I am doing that. Imagine what the teams themselves would have been doing, especially I think City here. 0.78 was the expected goal for City, 0.35 for Real Madrid, and that is telling a lot. And that tells you कि काफी unforced errors हुए by each team. That is what I'm telling you. They had those mistakes, proper moments थे और वहाँ पर I think they missed it. But I think at the end of the day, अगर second half के end तक 2-1 रहता है उदय, I know as a neutral we wouldn't like to see it, but अगर 2-1 रहता है, do you think Pep will be the happier manager looking at the first half or Ancelotti? I think Ancelotti will be taking a sigh of relief because of the chances that City have missed. They should have, if Liverpool would have had those chances, Liverpool मार लेती है आराम से. Diego Jota, Luis Diaz दे देते वो chances. Mane का भरोसा नहीं है. Mane has been a little less clinical this season, but looking at Pep, he will be disappointed because he would have got at least 3-1 की lead तो होती first half में. Correct. यार ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे थे. I know that as a comparison, हम usually we don't encourage, but again, ideally you could play with both, right? Because Iniesta could kind of cut from the left. De Bruyne is a little bit good when it comes from the right. That's a natural kind of path that he has on him. I would say short-term vision in terms of those grounded duels. If you want to get past defenders, if you want to dribble past defenders, use Iniesta. If you want something for a long-term, mid-term, mix a hybrid player who can play from a deeper and also from a shooting point of range, I would actually go in with KDB. So both these players can play together, but comparing both these legends it is not done. I mean, you can't compare these players at all. अरे क्या हुआ अद्वै after seeing अद्वै के comments, man? Sometimes I kind of wonder, is he kind of doing the banter or is he kind of joking or is he actually pissed off? खौफ में भाई खौफ में. लेकिन that is the sense of humor that Adway has. Like probably I'll take it that way. लेकिन again, people, second half start शुरू होने वाले हैं. Now that we have seen this first half, yes, Casemiro was a big miss for Real Madrid clearly. Because Modric, as much as he's very good on the ball, I don't think he has the Casemiro element in him. वही चाहिए था उन्हें. KGF dialogue है. Adway मैंने KGF देखा नहीं है. हाँ मार दो भाई, पकड़ के मार दो मुझे. Because yes, I know with KGF. It's always been that thing, right? But Nacho coming on. People, Nacho coming on for David Alaba. Can you believe it? Bhai, that is a huge call. I don't know if it's tactical. Again, comment below. Do you think Nacho coming on sahi hai ki nahi? I know Alaba had a shitty first half. Alaba wasn't in his element at all. Lekin
Nacho coming on for Alaba in a Champions League semi-final at half time. अगर इंजरी नहीं है, is it the right call despite Real Madrid going 2-1? They're just 2-1 behind. Yes, you can say this should have probably been 2 goal का difference होना चाहिए था, लेकिन they are 2-1 behind. So little strange Alaba. अभी he's calling him off. So I think next season Alaba शुरू नहीं कर रहा. भाई ये तो हद हो गया. Okay. Interesting. Nice to know. Let's Nacho. Yes, everyone. Let's Nacho. The good one. Let's see, man. अभी क्या होता है भाई? Again, आप बोलोगे नाचो का बेस्ट पोजीशन. हाँ, कल एक स्ट्रीम में क्वेश्चन आया था. Which is Nacho's best position? Right back, left back, or centre back? मैं बोलूँगा left centre back. This is probably his best position. So in a strange way, I can still see it's okay. लेकिन भाई, in a Champions League semi-final, you are getting off Alaba. क्या वो इंजरी है? Again, I don't know. Please let me know. There was a rumor that ATK Mohan Bagan wanted to sign Diego Costa for the upcoming season. What are your views on this? नहीं भाई, नहीं. I don't want. Honestly, मैं बोलूँ तो I know as much as Indian football लाने चाहिए बहुत known players and all that. Yeah, finished footballer हो गया वो तो. He's a finished footballer and he's a Chelsea cult hero. मैं बोल रहा हूँ खुद ही. He's a finished footballer. But not just that, भाई उसको कोई क्लब मिल नहीं रहा, इसलिए वो ATK मोहन बगान आएगा. There's the difference. But again, if they call, if you're getting to call a player, why not? Again, business would say that they will be able to sell a lot of shirts as well, possibly, especially with COVID. Touch wood, I know it's coming again, but hopefully it should get better again. Let's see. Yes, मोहन बगान make use. Mumbai City में चाहिए मुझे KDB. KDB, why not, man? KB. Yeah, but Diego Costa. That's quite possible. It's very, very much possible. Absolutely. Or yes, by the way, we intend to cover some Indian football as well. हमारा है Indian football. Check our playlist. We do cover whenever we get a chance. At least the big derbies and the big games, the finals, etc. हम cover करते हैं. Hopefully हम ISL next season भी cover करेंगे. Let's see. अगर हम you guys help us. So by the way, यहाँ पर City get a breakthrough from Mahrez and they should have scored and nahi. Mahrez hit the post, rebound Foden got and he hit the player Militao. It was a mistake. Was it Nacho? And he made a mistake. Let me see. I actually missed that part. Lekin absolutely, I think it was a mistake as well. Again, comment करिए भाई जो देखा वो moment. It was a clear hug दिया, proper hug दिया. I think Nacho नहीं हगा यार. अरे नहीं Militao था. Militao. Bhai, Militao lost the ball. Very strange. Militao doesn't do that. Real Madrid defensively are not there in the minds. I have no idea क्या हो गया Real Madrid को. And that's one argument आप बोलोगे Ancelotti hasn't got going in many teams. Wow. यहाँ पर बच गए यार, बाल बचे. Literally बाल बचे Real Madrid. They can't take up players. There is a limit where only players from top 70 countries can play. Interesting. Well, dedication, भाई. सबका dedication, including yourself. लेकिन absolutely. By the way, अभी नहीं, तो just to give you a real picture, कैसे होता है for content creators right now, and just not me. And this is about most of the content creators, especially जो हमारे time zone में रहते हैं ना. तो अभी कितना बजा? 1:30 बजा है. ये मैच खत्म होगा 2:30 बजे, right? Second leg potentially खत्म होगा 3 बजे. 3 बजे के बाद में एक तो हम लोग खुद breathe in करेंगे, समझेंगे क्या हुआ. Then we kind of analyze, we record. हम जाते हैं या live जाते हैं. That is about 4 AM. By the time the video upload करते हैं, that becomes 5 AM. और next day हमें और चीज भी करना होता है. So that is what it is. So again, all the love that you guys are giving to all content creators, much love to you all as well, of course, because without you all ये channels नहीं रहेंगे. And of course we just love watching football and cricket as well, people. On My Boost Cricket आज नहीं किया stream, I know promise किया था, लेकिन भाई sorry, I had few people coming at home, so I couldn't do that. सबकी मिली भगत है. Real playing to lose, भाई. Uday, you missed a moment. I saw that. That was some shot, man, but hit the post. The moment Nacho comes, Militao has no connection with him. Yeah. Totally loses the ball. What does that about? And Dani Karaval, he made that save again. Foden and the Mani coach on the rebound. Kudos to Dani Karaval. That was a goal line clearance for sure. Yeah. Absolutely. Okay. Ankit bhai, video request. Can you make a Cruyff football philosophy and football? A lot of big coaches are using that for. Okay.
चलो करते हैं Aditya, definitely because Dutch football is one of my favorite football, especially the one that Cruyff has kind of got. लेकिन मेरे ख्याल से भाई अपना मार्कोनी ने किया है, just kind of saying, मेरे ख्याल से मार्कोनी ने किया था from what I remember. Again, Insane Football Talks एक और है, बारसा फैन जो कंटेंट क्रिएटर है, शाउट आउट दे रहा होगा, आप देखो हमने फीचर भी किया है कुछ चैनल्स को, देखिए उनकी भी. Again, जैसे बोलता है, we are trying to create a community. It's all about doing as much content as we're able to. And of course हम आएंगे यार, समर है तो होपफुली अगर ट्रांसफर मार्केट इतना बिजी नहीं रहेगा तो you will see a lot more content coming. We'll get back to the who am I's of the quizzes. We'll come back to a new series about certain tactics. That will be brilliant. कौन सा philosophy बारसा ले सकती going forward and things like that. We will certainly plan something more. Apart from whatever is happening, we are also trying a quiz series week now. Let's see if we are able to kind of get that going. Or there is a history series as well that we have. Last 20 years का series मैं करता हूँ. Please check the playlist जो भी मिस किया. पहले चेल्सी का करता था, अभी सब क्लब्स का करता हूँ once in a while. उदय, लेकिन just kind of asking man, मतलब again, if you are not a Liverpool fan, leave Liverpool. Honestly, is there something like this team deserves to win the Champions League? Do you believe in that? Are you talking about Liverpool or Real Madrid? वो होता है ना, some people say नहीं यार, this team deserve to win that Champions League. Liverpool does deserve to win the Champions League. They have been brilliant. अरे first condition वही था, leave Liverpool. ठीक है, Liverpool को छोड़ दो. City any day. City deserves, you feel? Okay. They do deserve. I don't believe in that. I disagree with you on that. The reason is because I don't think there is again, a lot of people say 2012 में जो anti football किए थे Chelsea and whatnot. भाई, defending is a part of the game. Let's be honest about it. It is part of the game. It's a very important part of the game. And there is a tactic. You sit back after a while because आप अगर you go toe by toe, आप नहीं कर सकते हो prime बारसा के साथ. Currently, I don't think if you go toe by toe to City or Liverpool, many teams can compete. तो करना पड़ेगा, absolutely. Yes, Rahul, absolutely. Thanks for that. Ralph Ragnick, wow, यहाँ पर यार खोल दे रही यार, डिफेंस गोल हो गया. अरे भाई क्या easy यार, easy. वापस they allowed the ball to come in. Phil Foden gets in the goal. Man City 3-1 at home to Real Madrid, and I would like to say at least आज का दिन तो I think Man City deserved it, if not the Champions League. It is Vinicius' fault. He couldn't track back. उसने अपना मार्कर छोड़ दिया और फर्नांडिनो ने एक बढ़िया क्रॉस लिया and Phil Foden's heading was on point. I think brilliant goal. Wow, man. I don't know, Man City fans. Man City fans काफी थे. I think probably they are busy watching the match and celebrating right now. लेकिन of course भाई मतलब नहीं यार, मतलब I think it was Mendy as well, na? Mendy got easily beaten. Mendy got beaten, but also Vinicius should have run something. Mendy got beaten by Fernandinho. Overlap, exactly. वो overlap होता ही नहीं Fernandinho. Yeah. You're right. Given his age, he should have stopped him, man. For Mendy भी गलती है, बिल्कुल सही बोले आप. Foden को कौन मार्क कर रहा है? Foden को कोई मार्क क्यों नहीं कर रहा भाई? अरे, it is naive, man. Naive football. I am hating this to the core as a Chelsea fan because यार मुझे मालूम है we would have opened this defense up. Yeah. For sure. It's terrible defending. And no, Ancelotti is blank. I know he doesn't give एक expression नहीं देता Ancelotti, लेकिन literally he's blank. His face is blank. He is watching his Everton side play लग रहा है. It's as bad. Trust me. Again, Real Madrid fans, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग खुद मेरे ख्याल से जान के बोलो यार पेप गॉर्डियोला पता नहीं क्यों ही तो रो रहा है. कोई बोलिए भाई, क्यों पेप गॉर्डियोला को क्या हुआ? कोई कार्ड वार्ड मिल रहा था क्या? Why is Pep Guardiola crying when he is 3-1? He's getting a yellow card. Why? Why, man? Exciting करने के लिए मैच किस लिए कर रहा है? अरे audio, I hope I could hear the audio, man. People who are hearing, please comment करिए. Anyone watching, please tell me what happened to Pep Guardiola because I missed that moment. मुझे लग रहा है कि possibly उस moment में there was also a card, there was a push or a pull somewhere जो नहीं मिला Real Madrid के player को. वही हो सकता है और क्या हो सकता है? Sorry, there's a comment. David Villa is the greatest Spanish striker ever. What do you think, Ankit? David Villa is the greatest Spanish striker ever. नहीं यार, Raul for sure, I would say. Goal! Oh भाई! What a match! Is it for real? This is happening for real, man. 50 minutes in,
We are talking 3-2 in a Champions League semi-final. No one wants to defend यार, डिफेंड क्या होता है? Football. भूल जाओ. It is 5-a-side फुटबॉल. ये हो रहा प्रॉपर 5-a-side 6-a-side फुटबॉल में जो हो रहा है ना, एक बॉल दिया, विनिशियस अपने पेज था, जो पूरे मैच में जो मिसिंग था ऑलमोस्ट Fernandinho. Oh, Got drawn in. He got drawn in. Brilliant turn by Vinicius, I must say. Yeah, brilliant turn. Yeah, Rodri tried his level best. Lekin too late for him to make the challenge. Nutmegged. He got nutmegged. Bro, individual brilliance, bro. दोनों गोल individual brilliance की वजह से. Same Vinicius and Benzema. The duo is lethal as ever. Very vicious. रियल मैड्रिड को ना चेंज कर देना चाहिए अपना नाम यार. Seriously, man. They are real comeback kings. Really, man. Yeah. मतलब that's what आप बोलोगे. Are they for real, man? They are मतलब पूरा huggy यार team. As a neutral who may not understand football every bit of it, trust me, आप सोचोगे 3-2, वाओ मजा आ रहा है, गोल्स हो रहे हैं, brilliant. बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं, more than mistakes, आपको देखने में अच्छा लगेगा. Just for that fact that okay, fine, we are kind of getting goals as a newbie, you do that. Lekin I think it's clear to say that if not for those, I think they had totally 3 or 4 moments and they've taken 2 moments. City have had 7 or 8 moments, they've taken 3 moments. That's the difference. नहीं होते? Yeah, for sure. I think City have had their moments much bigger than what Real have had. But this was expected, to be honest. मैंने ये expect किया था कि Real will not be dominating on the ball. एक और उन्होंने भाई this City का almost हो गया रे गोल. Almost. Militao with a Real का Militao with a header. Zinchenko को again close in नहीं कर पाया. करना चाहिए था close in. किया नहीं उसने करवाल को. अरे मैं तो बोल रहा हूँ यार, फुल बैक्स, आई डोंट नो, कोच बोलना भूल गए भाई. यू आर सपोज्ड टू क्लोज देम डाउन, डोंट लेट देम पुट इन द बॉल. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न एज अ डिफेंडर, एज अ फुल बैक स्पेशली. अब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन अगेन आई वोंट माइंड इट. सॉन डूइंग विनिशियस डूइंग सॉन नहीं, For sure. ग्रेट टर्न. लेकिन सॉन का जो गोल था भाई, दैट इज अ डिफरेंट एलिमेंट. That is you cannot compare that, to be honest. On Super Mario goal against Burnley was historic. Yeah, this was probably Saul goal against Bayern. लेकिन again Saul का मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा एफर्ट नहीं था. Saul का थोड़ा लंबा एफर्ट था, राइट, और ज्यादा. लेकिन हाँ, certainly in terms of the moment of the game, you can say that Aritra, और जैसे टर्न किया Vinicius, you can say that. But हाँ, talking about Saul भाई, वो कहीं भी नहीं दिख रहा आजकल. पता नहीं कहाँ गायब हो गया Saul. Is something that only he can say. No one can really say that. But oh man, I am like 55 मिनट हुए उदय, मेरा बीपी लेवल, मैं न्यूट्रल हूँ. इमेजिन क्या हुआ होगा यार. मैं आई वुड लव एनी रियल मैड्रिड और सिटी फैंस जो आना चाहे अभी स्ट्रीम पर, और जनरली कोई भी आना चाहे, प्लीज लेट मी नो भाई. एनीवन इज वेलकम. भाई ओपन स्ट्रीम कर देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हो? ओपन स्ट्रीम कर देते हैं. सच आई थिंक it has potentially got 3 more goals in it. मैं 4 all भी देख सकता हूँ अभी. सूर्यांश आते हुए हार्ट अटैक टीम है. यस भाई, एकदम बढ़िया कमेंट सूर्यांश. बाय द वे मैड्रिड पंडित्स चेक करिए भाई, काफी अच्छा काम कर रहे हैं मैड्रिड पंडित्स भी. आई नो यार, हमें करना है एक और स्ट्रीम, बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं, करना है, काफी करना है. दैट इज समथिंग दैट इज पेंडिंग. गोल्स की बारिश चल रही है एकदम. अगेन I would have loved it was superb goals alone, लेकिन थोड़ा mistakes के साथ आ रहे हैं. That is the only caveat for me. That's why I would not put that in that legendary kind of match still. लेकिन हाँ, it's there for us. Semi-final, okay, Uday, I'll put it to you. Which has been your best Champions League semi-final ever? Take your time. I mean, chat के लिए भी जाता है question. Ajax was with Tottenham till now in the present generation. Easy है. अच्छा, yours. I think English league supporters, it's pretty easy choice because it was fairly recent as well. Yeah. Ajax. If you talk about the past as well, I think Bayern Munich का जहाँ रॉबिन ने गोल मारा था, I think 14 में था वो, 13 में था, याद नहीं मुझे, लेकिन रॉबिन एंड रिबरी both had scored goals. That was also an amazing semi-final. Yeah. Okay, yeah, Barca fans बोल रहे हैं, don't have enough words to admire Vinicius. But I don't know, Aritra, सूर्यांश, राहुल, तन्मय, big up यार सब लोग जो भी join कर रहे हैं. Elias, again, like I said, do like the stream. Do not forget that one thing, and of course, do share it on social media. You can just simply retweet my tweet. That will be great.
8-2 अद्वै बोल रहे, but for me again, whatever be it, maybe the occasion, maybe जो थी Chelsea, maybe I'm biased. I would still say nothing can beat the drama that we had at the Camp Nou. Chelsea at the Camp Nou, 2012, जो drama हुआ था. That was poor refereeing too, you know. उसमें 2012 में नहीं है, कहाँ poor refereeing भाई, उसमें कहाँ टेरी got sent off. मेरी याददाश्त कमजोर है. No, you're right. 2009 में 100%. 100%. So I'm not talking about bad memories. I don't want Iniesta was part of that bad memories, by the way. लेकिन I think 2012 में when it happened, when obviously Torres scored, when Gary Neville, he got something in his throat. That is the moment I'm talking. But more than a moment, it's just a game. When Ramirez scored at halftime, goal chipped over the Valdez, and we were down to 10 men already. That is something, some performance. Again, we didn't have a proper manager technically, right? मतलब again semis. क्या नाम है उसका? He was there for interim manager था, उसका नाम भूल गया मैं. Roberto Di Matteo. हाँ. ये गोल होने वाला है. ओ भाई, बच गए भाई. City was just escaped. City just escaped. It was. Modric has stepped up massively. Left mid position में आ गया Modric ना, तो उससे उनको help मिल गया. गोल होने वाला है. ओ बच गया. Nice. I would give it to Rodri, man. Rodri है ना? कौन है? Rodri defend किया है. 2 header. Rodri, हाँ. Rodri, that looks brilliant. like Ruben Diaz. नहीं, इतना लंबा नहीं है Ruben Diaz भाई. I think Rodri होगा. Rodri is one. 31 जॉर्जी किसकी है? Ruben की है? Ruben Diaz ही लग रहा है मुझे. एक सेकंड चेक ही कर लेते हैं ना जल्दी से. यहाँ पर नहीं यार, ये है डेफिनेटली it is 31 तो नहीं है, 16 है Rodri. Diaz 3 है. 3 होगा. Diaz ही होगा. Chelsea Ajax यार वो again it wasn't a semi game, but yeah, I hear you. Ajax का Tottenham के साथ, that has to be वो thriller था, बहुत बड़ा thriller था. Correct. That is one for sure. And yes, it's a disgrace. Absolutely, that is the game that I think Uday was referring to. I was referring to the historic good history there. 2012 that match against Chelsea still haunts us. Yes, Aritra, और काफी सारे बारसा फैंस मुझे याद दिलाते रहते हैं हर एक स्ट्रीम में. बारसा की स्ट्रीम में आपको पता है कि यार इनिएस्टा वर्सेस चेल्सी, इनिएस्टा अगेंस्ट डच टीम. So again, it's probably my time to remind you all again, just for fun, right? But that is really just as a neutral also you would say, I think that was a story. एक बोलते ना story, you couldn't write a script. That was what it was. That was a proper season 2012. That is why we celebrate. मैं तो बोला 2012 even more so. I know Tuchel did a madness, लेकिन I celebrate 2012 more even now. Guys, please let Ankit, यार सर मत बोलो राहुल, आपके जितना ही हूँ मैं, 18 साल का हूँ, just so you know. मैं बोलता हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी. But anyway, jokes aside, absolutely brilliant to actually have Rahul say that. Always share the link if it is open stream. I think the link some people may like to join. ठीक है भाई, share ही कर लेते हैं. Maybe that's a good point. What do you say, Uday? Let me share the link. Well, for sure. It will be nice to see. People are hesitating to comment क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर मोड ऑन रखा है ना, तो उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि उनके पैसे लग जाएंगे. वो तो सोच रहे हैं, लेकिन नहीं लगेगा भाई. मैं 240 चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा हूँ, नहीं लगता है. आप लाउड माउथ फुटबॉल को भी करिए, नहीं लगेगा. मैं भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मुझे भी सब्सक्राइब. नहीं है, बनाने की कोशिश, अच्छा कंटेंट है, मतलब इसीलिए तो आप हो पैनल पे. डच वर्सेस स्पेन, या मैन, this was actually 2010. Dutch versus Spain to the 2010 2014 वाला तो brilliant performance. What a performance. बहुत तगड़ा मैच था वो भी. Brilliant. हाँ, वैन पर्सी, रॉबिन, भाई 3-3 हो सकता है. Yes 3-3 जरूर हो सकता है. I think that's what I think I'm hoping अभी हो भी, क्योंकि यार था भी. I think वो if not for Diaz in those 2 moments होते, probably आप बोलोगे हो सकता है, but there was no real chance. अगर रियल मैड्रिड के किसी प्लेयर के पैर में होती बॉल तो डेफिनेटली आई वुड हैव कंसीडर्ड. लेकिन बीच में बेंजेमा था रेडी टू हेड द बॉल इन, सो दैट वाज नोइंग बेंजेमा. It was almost that moment where Rudiger slipped and Benzema scored, ना. वही यहाँ पर Diaz slip नहीं हुआ, he got the head in. Right. Exactly.
But yeah, City also missed a chance in first 2 chances in the first half. 1 chance है तो City fans भी बोलेंगे कि हाँ भी हम भी जीत सकते थे. But हाँ, competitive रहा अभी तक मैच. With City obviously having more control on the game. Yes, absolutely. Okay. देनुका यहाँ पे ट्वीट कर रही है. मैं तो देनुका का यार देनुका, I don't know if you'll mind it. I'm pretty sure you won't mind it. So I'm just taking the opportunity and giving some content to people. So I'm showing some tweets. I'm pretty sure I'm allowed to show tweets. And I Uday. So Yeah. Looking forward. क्या तो यार रियल मैड्रिड आप देखे थे देनुका वाज देयर इन द हाउस एंड शी इज मोर और लेस ऑलवेज देयर विद रियल मैड्रिड. थैंक गॉड दैट शी इज ऑलवेज देयर. लेट मी एक्चुअली शेयर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शेयर. कहां गया? अच्छा, दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड फैंस आर डूइंग नाउ. Very apt. This is apt to the situation at the moment. Denuka, you're live. I don't know if you know, but I just put there right now, and we have Adway. Adway himself has come on. Good to see Adway always. Let's have some insights from Adway. Adway, bhai, kaise ho? Adway, are you there? I think Adway आपका सुन नहीं रहा है. I think it's an audio problem. If in case you're trying already. Maybe sometimes it happens. You might want to go back and come back and or mute पर हो गया आप. Let's see. Maybe you are on mute. Adway, we're not able to hear. No problem. Adway, आप check करिए आपका volume. But meanwhile, let me take this comment. भाई क्या मुकेश अंबानी चेल्सी खरीद रहा है? इसी न्यूज आ रही थी. नहीं यार. Uday, where are you on that, man? Like again. I like I said in other streams, I don't care who takes as long as that person cares about Chelsea. अगर मुकेश अंबानी ने खरीद लिया तो नीता अंबानी और उनके बेटे मैनेज करेंगे चेल्सी फुटबॉल क्लब को. तो आप देख लीजिएगा मुंबई इंडियंस की जो ओनरशिप थी. आप खुश हैं उनसे? तो आप सिमिलर आप चेल्सी एफसी में भी यही देखेंगे आप. गोल हो गया. ओ बच गए यार, बच गए. लापोर्ट, ए भाई, what football are they playing? Laporte out of nowhere was in the center forward position. Oh man, exactly. कोई भी आया था नंबर 9 में. ये क्या चल रहा है भाई? ये प्लीज कोई बोलिए. Good tiki-taka from Foden, De Bruyne and मुझे नहीं यार, कितने 22 साल हो गए मैं फुटबॉल देख रहा हूँ लिटरली, राइट. आज तक मुझे नहीं पता यार क्या खेल रहा है पेप गार्डियोला. क्या फॉर्मेशन खेल रहा है? कुछ भी खेलता है यार. सेमीफाइनल देखा है? किसी सेमीफाइनल में 4 मेजर चांस मिस किए हैं किसी टीम ने. इतने 4 मेजर चांस, वो भी सेमीफाइनल. चेल्सी ने किए थे रियल मैड्रिड के साथ लास्ट सीजन. वी शुड हैव फिनिश्ड दैट गेम इन द फर्स्ट लेग. You should have. Yeah. होता है यार, होता है. अच्छे का होता है. Like that happens a lot. मतलब talking about semis, City themselves missed against Real Madrid. जो I think they were ousted by own goal by Fernando. Yeah. 2015-16 में सिटी के पास chances थे, लेकिन they weren't taking and then they were punished. Okay, Adway is getting the camera on this time. I think first time देख रहा हूँ Adway को. Adway कैसे हो भाई? सब ठीक? हाँ Adway बोलिए. I think there is an audio issue अभी भी. Probably I don't know whether it's first time camera, maybe the internet sometimes होता है Adway. नहीं सुन रहा अभी भी. I don't know. Adway विदाउट कैमरा ट्राई करिए एक बार, देखते हैं अगर आपका आता है कि नहीं. बट बाय द वे यहाँ पर रॉड्रिगो और विनिशियस का चल रहा है. आई डोंट नो व्हाट टू से. एनीवे, बाय द टाइम Adway fixes it, let's see. 22 साल से फुटबॉल देख रहे हैं पर एज है 18 लेवल की. हाँ यार, पिछले जन्म की बात हो रही है. याददाश्त थोड़ी होती है ज्यादा कुछ लोगों की. समझा करो, भावनाओं को समझो. नहीं, लेकिन एब्सोल्युटली जस्ट टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई थिंक आई शेयर्ड अर्लियर एज वेल. मैंने एक्चुअली किया है नो द क्रिएटर सीरीज. अगेन ये भी एक सीरीज है, हमें ज्यादा करना है. बाय द वे यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन आते हुए, रोड्रिगो गोइंग ऑफ एंड कामाविंगा. He's not been a good addition. पता नहीं क्या हो गया. रोड्रिगो बिल्कुल ही साइलेंट था. वो सप्लाई नहीं मिला ना बंदे को. सप्लाई नहीं भी मिला. राइट फ्लैंक कुछ कर ही रही है रियल मैड्रिड की. ओनली लेफ्ट फ्लैंक, सब अटैक्स लेफ्ट फ्लैंक सारे. वाल्वर्डे गोइंग टू राइट विंग बेसिकली, राइट. चलो देखते हैं क्या करता है वाल्वर्डे. या सिस्टम तो शायद ही चेंज करेगा. मुझे नहीं लगता सिस्टम चेंज करेगा. कोई नहीं Adway, टेक योर टाइम, नो हरी. अभी है मैच काफी, आधी घंटा ऑलमोस्ट.
क्या चांस था? यस, 5 more likes to 50 likes. Come on, bhai. 100 likes होने चाहिए. Actually speaking, we should get 100 likes in a match like this. Come on, we should get 100 likes. But yes, of course, really grateful जो भी है, और by hopefully every one of you, each one of you has subscribed by now or at least checked out Loudmouth Football. You won't be disappointed, trust me on that. And you'll see a lot of Uday on this channel, and hopefully I'll be there. It's just the time difference that we haven't been able to fix a lot. लेकिन certainly होंगे. अभी यार देखते हैं, मतलब फॉर्मेशन मुझे तो कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है. It's the same thing. Carvajal is kind of very narrow, and Valverde is gone like a wing back, but वही है, मतलब when defending they are playing with potentially six at the back. Real Madrid. अभी जिंचेंको का स्लिप हुआ था. He should have taken advantage of it, Valverde, to be honest. नहीं लिया. अच्छा, तो चलो अद्वै का थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं. होपफुली थर्ड टाइम लकी हो. वी आर ट्राइंग टू गेट इन अद्वै. अब आ रही है क्या आवाज भैया? हाँ अद्वै परफेक्ट अभी आ रही है. चलो बात करते हैं. कोई नहीं, मे भी कभी कभी होता है यार, इंटरनेट ब्राउजर का होता है. अरे नहीं, वो ब्राउजर का थोड़ा सा ये हो रहा था, माइक्रोफोन नहीं पकड़ रहा था. ये फोन से. कोई नहीं. यस तो प्लीज शेयर योर थॉट्स मैन. आप बोल ही रहे थे कमेंट्स में, लेकिन आप बोलिए सबको व्हाट आर थॉट्स अबाउट द गेम अभी तक. तो चेल्सी निकल गई है ना, तब से मजा आ जाता है. मालूम नहीं ऐसे तो थोड़ा सा यू माइट वांट टू गेट क्लोजर टू योर माइक्रोफोन. थोड़ा सा कम आ रहा है आवाज. अभी क्लियर है? हाँ यस. नहीं मैं यही बोल रहा था कि अब जब से चेल्सी आउट हुई है, रात को नींद भी अच्छी आती है, तो अब मैच देखने में मजा भी ज्यादा आ रहा है. मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है, बस ठीक है. मतलब अभी टेंशन नहीं है इसलिए क्या? बेसिकली कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे घूम रहे हैं बस. अभी चेल्सी का हम कितने इसमें कॉन्फिडेंट नहीं कर रहे हैं. I don't know, Uday, आपको भी ऑडियो इज इट क्लियर टू यू? I think there is audio is distorted. Yeah, it's fluctuating bro. अद्वै थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है. Maybe I don't know if the internet or maybe your audio थोड़ा क्लियर है क्या आवाज? अभी मैंने हेडफोन लगा लिया है. अब ठीक है. हाँ अभी बेटर है. क्लियर तो नहीं बोलूंगा, अभी बेटर है ना? हाँ बेटर है. ठीक. नहीं मैं वही बोल रहा था कि अभी मतलब ऐसे जब से चेल्सी निकल गई ऐसा टेंशन नहीं होता है. नहीं तो हमेशा होता रहता है, थोड़ा सा ऐसा दगदग होता है बहुत. ये थोड़ा सा, बट मेरे को ये नहीं बिलीव हो रहा है कि हम इस टीम के सामने गोल कैसे खा रहे थे. मतलब दिस इज जस्ट अ वन मैन टीम के सामने हमने 3 गोल दे दिए इनको फर्स्ट लेग. मतलब व्हाट वाज देखो ना, विनीशियस आज भी वही हुआ ना. करीम बेंजेमा विनीशियस दोनों जो बेसिकली आर द थ्रेड्स, those two people turned up for that one moment of genius, nahi? Yeah. So it's a fair point. Real Madrid have played a very poor game, to be honest. काफी poor game. Yeah, it's those moments, that's all. मतलब टैक्टिक ही नहीं यार. टैक्टिक ही मतलब ऐसा भी नहीं एथलेटिको मैड्रिड जैसे they are really closing down, they are really kind of dogged. ऐसा भी नहीं लग रहा. मतलब they are in between. मतलब they have to do one or the other. फाउल है ना, ये तो क्लियर फाउल था यार. अरे भाई व्हाट अ गोल बाय बर्नार्डो सिल्वा. व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड क्लास गोल बाय बर्नार्डो सिल्वा. सॉरी मैंने स्पॉइलर दिया तो, लेकिन भाई एंड रेफरिंग, ब्रिलियंट रेफरिंग दैट. आई थॉट दैट वाज अ फाउल. ही प्लेड ऑन इन अ मोमेंट एंड बर्नार्डो सिल्वा टुक इट बॉम. व्हाट अ ब्रिलियंट गोल. एंड सिटी मैन, there is some reason. मैं सोच समझ के बोलता हूँ भाई, जो भी देख रहे हैं. Again, no pun intended to anyone. And I'm not a supporter. लेकिन भाई City are looking, they are winning things ugly this time. That was a De Bruyne type shot. Complete De Bruyne type shot. Low back left, typical one exactly. मतलब Zinchenko technically got the assist, right? Yeah. क्या गोल लग गया क्या? नहीं, जिंचेंको का आएगा नहीं मेरे हिसाब से. असिस्ट नहीं आएगा. आएगा 100%. बॉल नहीं, डिफेंडर टच नहीं किया. डिफेंडर ओनली किक जिंचेंको. लास्ट टच जिंचेंको का ही था, तो असिस्ट जिंचेंको का है 100%. बाय द वे मुंबई सीटीएफसी का भी चल रहा है मैच. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन अब बाहर हो गई ना अब तो नहीं बाहर नहीं हुए ऐसे कुछ 4 गोल से जीतना है. अभी तो देखिए 20 मिनट. हाँ मतलब एग्जैक्टली. मैं बाहर मुश्किल है टाइप. हाँ तो बट स्टिल दे वन है. मतलब आई थिंक गोवा जस्ट प्लेड 3 गेम्स एंड दे डिड 3 ड्रॉस. मुंबई को फिर भी 6 मैचेस मिले हैं, तो दे शुड बी फिनिशिंग थर्ड. आई थिंक थर्ड पे भी कुछ तो है, मिलता है उनको शायद से किसी और
उसमें यार खेलने का करीम बेंजेमा को देखो आप, करीम बेंजेमा इज लाइक स्माइलिंग, वो स्माइल कर रहा है भाई, ऐसे भी हो सकता है यू नो। बर्नार्डो सिल्वा एक और गोल मार गया वो ना, अरे ये तो स्पोर्टिंग जैसे डिफेंस कर रहे हैं यार, स्पोर्टिंग जैसे की थी फर्स्ट लेग में ना, मतलब आई कांट बिलीव इट मैन, जैसे रियल मैड्रिड, मतलब नो वंडर रूडिगर को इतना, अरे मारेज भाई अच्छा खेल रहा है, मारेज काफी अच्छा खेल रहा है। या आई थिंक इज अनप्लेएबल मैन ऑलमोस्ट एट टाइम्स। देखो चार, oh man, that deserved a goal, that deserved a goal, मारे मुझे रॉबिन की याद दिला रहा है यार ऑलमोस्ट, मैन what beautiful football, he literally he showed, he dropped the shoulder and he showed the eyes to four people. To be honest, City should have been 6-2 up. सही बोलूं मैं। Already 6 goals in the match, how many more to come? I don't think any more goals are coming now. मतलब अभी वो पाक बस पीछे पाक कर देंगे, अभी नहीं मारने जाएंगे। अरे नहीं कर रहे ना, पाक करने के बाद तो भी एक गोल पड़ गया उनको। नहीं करने वाले, नहीं मुश्किल लग रहा है। अब वो बता देगा, थोड़ा सा पीछे खेलने बोलेगा, अब इतना प्रेस नहीं करेंगे। सिटी तो प्रेस नहीं करेगी, हाँ मतलब रियल मैड्रिड कुछ कर लेते, उनका तो वैसे भी वही है ना, वन मैन ब्रिलियंस, तो फिर तो मालूम भी नहीं। बॉस I think City should take advantage of this, that they're not playing that well. उनको और गोल ठोकने चाहिए। Exactly. They should. They are there for the taking. Real are having a shite match. Let's be honest about it. It's only those नहीं, that is true. Exactly. तो वो मोमेंट्स अभी भी, और एट द सेम टाइम अदवे रियल मैड्रिड को भी अभी मोमेंट मिल सकते हैं, तो ऐसा मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि रियल मैड्रिड स्कोर नहीं करेगी। व्हाट इफ रियल मैड्रिड स्कोर वन मोर, 4-3 विल बी अ ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड, नहीं अदवे? No. They I think this is just part of the master plan. I think it is all they have to. They want to go back to Madrid and they will win. I don't know. They'll pull off this PSG again. I'm sure of it. यही करते हैं, मालूम नहीं इनका क्या इस साल का, मतलब ये इस साल they are repeatedly doing it यार। पता नहीं यार, हर एक गेम में हो रहा है, मतलब वो ला लीगा में हर एक हो रहा गेम में कर रहे हैं। सिटी अगेंस्ट पीएसजी वाला पुल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल तो है नहीं, सिटी इज नॉट पीएसजी। आई थिंक सिटी का मिडफील्ड ही स्ट्रांग है ना, पीएसजी के पास मिडफील्ड की तरह है, तो मिडफील्ड में ही आउटप्ले हो गए थे वो तो सेकंड हाफ। या एग्जैक्टली। यहाँ पर Madrid is right now facing lack of concentration. Aritra बोल रहे हैं, and Pep will try to take advantage and score 1 to 2 more. Knowing Pep, yes, Pep now also got a press. Pep will still try to score 1 more. या मतलब अभी भी है 13 मिनट, एंड इन 13 मिनट में अगर रियल को कैसे ना कैसे मिल जाती है गोल, 4-3 विल बी नॉट अ बैड रिजल्ट, एक्चुअली अ ब्रिलियंट रिजल्ट कंसीडरिंग जो हुआ है गेम प्ले में, लेकिन आई थिंक इट्स देयर फॉर द टेकिंग, दैट्स व्हाट आई वुड से। सो सिटी रियल अटैकिंग नाउ, बाय द वे रियल आते हुए विनीशियस जूनियर मोमेंट, यहाँ पर स्पेस मॉड्रिच को मिल रहा है, मॉड्रिच विद अ शॉट, गुड पास बैक आउट, एंड आई हैव अ फीलिंग मैंने टोटल स्पॉइलर दे दिया, लेकिन हाँ it was actually a moment for Real Madrid, trust me. Not a very convincing shot, but ठीक है। हाँ मतलब वही है, शॉट अच्छा नहीं था लेकिन था, स्पेस था, there was space and time given to him, तो he could have had a better shot. अरे भाई सेबायोस आते हुए, ये कैसे दिन आ गए रियल मैड्रिड पे? ये क्या हुआ भाई? इसी बात पर सब लाइक कर दो भाई, कम ऑन, we can get, and प्लीज एक लाइक कर दीजिए, आप स्ट्रीम को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो जी, ऑलमाइटी ब्लूज। yes. And you check out Loudboard Football, and अद्वै आप क्या चैनल खोल रहे हो आप? नहीं अभी तो मेरा वो चल रहा है ना, जेई प्रिपरेशन चल रहा है, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बाद में खोलूंगा फॉर श्योर। तो अभी मैं अपना थोड़ा सा एंगेजमेंट बना रहा हूँ। नाइस मैन, नाइस, ऑलवेज गुड टू बी। अच्छा बाय द वे, ये टुकेल वांट्स टू ब्रिंग बैक डुजॉन स्टर्लिंग नेक्स्ट ईयर, जो ब्लैकपूल में इस साल है लोन पे। आई थिंक और नेक्स्ट ईयर कुछ तो प्रीमियर लीग रूल्स भी है कि यू कैन ओनली डू 6 लोन्स, मतलब आप ए टीम में आपके जो वो है उसमें से सिर्फ 6 प्लेयर्स लोन पे बेच सकते हैं, ऐसा कुछ तो रूल आया था बीच में। तो मतलब चेल्सी को शायद नेक्स्ट विंडो में थोड़ा सा ऑलमोस्ट बेंजेमा क्रॉसिंग बजट मिल जाएगा शायद। नहीं तो क्या है ना, वो बेसिकली आई डोंट थिंक इफ इट्स फॉर्मली सैंक्शन्ड फॉर ऑल द कॉम्पिटिशंस, लेकिन हाँ सर्टेनली दैट हैज बीन बेसिकली इन पास्ड बाय मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, तो लग रहा है वो होगा जो अद्वै बोल रहे हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इसीलिए मे बी आप बोल सकते हो कि चेल्सी इन द लास्ट 18 मंथ्स नोइंग दैट वो आने वाला है रूल, कि
we get an offer and we sell that player, you know, with a buyback. That's what हम कर रहे हैं बहुत अभी. Absolutely. Yes, राहुल भी कर रहा है भाई जेई का प्रिपेयर. चलो साथ में होंगे राहुल और अद्वै. Absolutely brilliant वो. यार राहुल आप भी चेल्सी फैन ही हो ना? Just kind of making sure. हाँ चेल्सी फैन ही है वो भी, चेल्सी फैन. अरे क्या हुआ यार? 1-2 बार तो चैट पे लिखा था. क्या हुआ? पेनल्टी हुआ है? ये हो गया मोमेंट्स ऑफ सी. Oh man. बताओ पेनल्टी मिल गई. हैंडबॉल. Yes. लपोर्ट हैंडबॉल है, 100% हैंडबॉल. हाँ बेंजेमा को टच, हाँ हैंडबॉल है. It hit his head and then his hand. Very unfortunate. लेकिन Paulo Ferreira got a handball, I remember back in the day versus Liverpool. Very similar. Handball है. Moments of the man. कौन था? रॉड्री था? नहीं लपोर्ट. अच्छा रॉड्री होता तो नहीं मिलती हैंडबॉल. नहीं अनफॉर्चुनेट था. like literally glanced his own head और वो नो हैंड नहीं, ये तो अनफॉर्चुनेट ही था. हाँ मतलब वो जंप करने के लिए हाथ ऊपर किया था. अरे पर हाथ बॉडी से बाहर था ना, बॉडी से बाहर. ये चीज कोई भी स्टेडियम में जाए तो मत करना यार. एक तो जाते कैसे लेजर, आई डोंट नो, देयर इज अ लेजर स्पॉट. Don't give a spoiler for the penalty, okay? Don't give a spoiler for the penalty. But I'm giving a spoiler for the laser. बेंजेमा के चेहरे पर लेजर फ्लैश कर रहे हैं लोग, just so you know. साला के चेहरे पे भी बहुत की थी, याद है आपको? नाइजीरिया के सेनेगल के साला के चेहरे पे उसका स्किन कम दिख रहा था, लेजर ज्यादा दिख रही थी. लेजर्स मैन, लेजर्स, हाउ कैन यू डू दैट? अरे मुझे नहीं लगता ये प्लेयर्स को दिखता है लेजर. ये मालूम नहीं, सब प्लेयर्स अनअफेक्टेड है. I was waiting, man. I was waiting. मार दिया Panenka. That's a Panenka. अरे great penalty. Benzema doing a Zinedine Zidane. Can you believe it? Yeah. He actually just did that. A Real Madrid legend doing another Real Madrid stuff. What did for France? France का legend, you would say. Edison, man. So who will be headbutting? Panenka. नहीं पनेनका यार. अद्वै तो पनेनका लिया था ना. अरे हाँ पनेनका तो लिया. अभी आपने ज़िनेडिन जिदान से कंपेयर किया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हेडबट अच्छा मोमेंट ही करेगा ना लेजेंड का. बुरा मोमेंट थोड़ी करेगा वापस. क्या यार. Ancelotti is like it's right in between this. आप देखो करो सोचो. तुम मत खेलो, बस गोल चाहिए मुझे. खेलो मत, गोल दो बस. ये क्या है भाई? 9 knockout goals. Other way for you, where would you rate Benzema season in terms of history, man? UCL. No, this Benzema season is pretty much like prime Ronaldo seasons. So, you know, Ronaldo was pulling off seasons like 14, 16, 17, 18. That time Benzema was playing the second fiddle. वो जब से गया है मालूम नहीं इसको क्या हो गया. गोल पे गोल मार. He's just taken it upon himself. Too much, man. Too much. Gabriel Jesus is off, by the way, for City. I think he's doing these substitutions too late. He should bring them early. Actually, the thing with Pep is he actually prefers not even substituting a single attacker. अगर आपने उसकी गेम्स देखी हैं तो वो चाहता है वो सेम प्लेयर्स ही निकालें गेम. But anyways, that's because of the congestion of fixtures. हाँ पर ये प्लेयर्स खेले भी अच्छे हैं, पर ये थक जाते हैं ना, वो ही टेंशन है. वो तो है. Yeah, again, people watching. Sadhve, sorry, I'll give a quick shout out. I can see some people joining the stream. यार people जो join कर रहे हैं यार भूलिए मत. Please like the stream and do check out Loudmouth Football. The link is in the description. By the way, we are live tomorrow at 8:30 p.m. IST. Yeah, that's 4 p.m. UK, 8:30 p.m. IST for the next match detailed preview and much more discussions. Yes, Sadhve, please continue. Sorry. नहीं मैं वही बोल रहा था कि अभी 5 सब्स्टिट्यूशंस मिलते हैं आपको, CL में ही मिलते हैं, तो इधर कर लेना चाहिए क्योंकि आप भी you cannot even sabotage. You don't want to have anything going wrong with the PL campaign. I think they have a great chance of winning that. 5 ही तो मैचेस जीतने हो. Yeah, exactly. Benzema लंगड़ा रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसको. Maybe एक knock लगा है. थोड़ा लंगड़ रहा है. Okay. I read an article. यहाँ पे गोल होने वाला है. ओ भाई. Spoiler again, but yeah, that is like I don't know.
समर्थ थैंक यू भाई, लेकिन आई ये वुड तो एक्सपेक्ट आप आ रहे हो ओवर स्ट्रीम रिएक्शन था। पे कमेंट कर रहे हो लाइक इसके लिए तो मत आयो यार, मतलब ओ, यू कमेंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट या ब्रिलियंट दैट यू आर देयर कमेंटिंग। आई एम होपिंग यार आप इतना ही सपोर्ट भी करो जब आई एम डूइंग कंटेंट ऑन एवरी चैनल, समर्थ एंड एवरीवन एल्स, बट यस एब्सोल्युटली ग्रेट दैट यू प्लीज कमिंग एंड Ruben Diaz. commenting. but By the honestly, way, I was going Ankit through an bhai, article. Yeah, Adway, let me read this comment. yeah, Uh, sure. I was going through an article and read that as Mbappe is now almost sure to join Madrid, Leonardo is trying to build PSG team around Messi next season and he wants Zidane as a coach. I don't know, comment यार अद्वै क्या लगता है? हाँ, मैं यही पूछ रहा था, अभी मैं इसी के बारे में पूछ रहा था कि मतलब व्हाई डू यू वांट टू बिल्ड अराउंड मेसी नाउ, बिकॉज जैसे मेसी को ट्रीट किया है उधर, आई डोंट थिंक एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 2 years, राइट? डाउटफुल है, बहुत डाउटफुल है। सो ही इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग टू बिल्ड अराउंड मेसी। आई थिंक वो नेमार को भी अभी इतना वो प्रेफरेंस नहीं देता है। ही इज गोइंग टू ब्रिंग इन समबडी न्यू नेक्स्ट ईयर, तो इसीलिए ही वांट्स टू कीप एम्बापे। आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन ही वांट्स टू कीप एम्बापे, क्योंकि उसके स्ट्राइक लाइन में ऐसा कोई नहीं है जो फिलहाल फैन फेवरेट है। True. By the way, I would like to obviously apologize also to Samarth because it wasn't only on Samarth's thing, लेकिन मुझे काफी comments मिले आज। Samarth by this comment looks like he's an RCB fan, so मैं दुख समझ रहा हूँ। वो इतना बोल देता हूँ बस। आप ये नहीं है, आप कैसे कह सकते हो यार? मैं एमआई फैन हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ। आप आरसीबी के 2 ही मैच हुए हैं गंदे, ये कैसे बोल रहे हो आप? नहीं मुझे समझो जरा। काफी ट्रोल आ रहे हैं यार भाई डीएम्स में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं, ये आरसीबी का रेगुलर कोटा है, ये 100 बिलो आउट होना होता है, लेकिन भाई मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ यहाँ पर फुटबॉल, लिटरली आई एम स्ट्रीमिंग एवरी डे। यू कम टू द स्ट्रीम और आते हो ट्रोल करने के लिए, दैट इज नॉट डन। आप बैंटर करो, ट्रोल तो नहीं, अभी क्या वो किस्मत ही बुरी है, क्या करे। हाँ वो है बस। तो लेकिन हाँ अगेन एटलीस्ट आ रहे हो, वो भी अच्छी बात है। तो अगेन आई शुड रिएक्ट देयर। लेकिन उदय लास्ट 5 minutes Asensio coming on, don't tell me he'll do a Gareth Bale, man. Maybe, might be, never know. Asensio has had a pretty torrid run as a player, in the past couple of seasons. अरे भाई, did you see that? ये फोर्डन मिडफील्ड में आ चुका है बिल्कुल ही ना, वो फ्रंट थ्री का पार्ट ही नहीं है अभी। Valverde का अच्छा हो है ना। Everyone watching, did you see that Benzema the way he avoided, जो सिटी के डिफेंडर्स को अवॉइड किया है, that was prime De Bruyne in the season as well. Hats off man, ये प्लेयर अलग ही लेवल है। मतलब आई नो आप बोलोगे he is a great poacher, वो एक ग्रेट हेडर है, he is basically doing very good in that system moments, but Benzema technique also very underrated technique. नहीं उसका टेक्निक अच्छा है, लेकिन इस साल वही होगा ना कि बैलेंडोर की भी रेस रहेगी, वो डाउन टू द वायर जाएगी उसके और लेवा के पीछे। दोनों ने बहुत गोल मारे, आई थिंक बस वो ट्रॉफीज का थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा, इसीलिए इसका सीएल और एक क्या स्किल भी तो अच्छा किया ना यहाँ पे। विनिशियस जूनियर ऑफ एंड असेंसियो इज ऑन, ओके इंटरेस्टिंग। तो एंचेलोटी स्टिल कीपिंग द शेप, मतलब दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो। मैं सोच रहा था मे बी वो लगेगा लास्ट 5 मिनट चल जाते हैं एक और गोल के लिए, लेकिन ही इज कीपिंग द शेप। I don't know, would you agree with that? मुझे तो लग रहा है Ancelotti should have gone for it, man. Like, मतलब I know 4-3 is a brilliant result in itself, considering hardly अच्छा खेली है Real Madrid. Let's be honest. It's just a game. Offensive substitution ही है ना, substitution तो offensive ही है। Like for like है भाई, like for like है। What I was expecting है अभी वो एक और आगे डालेगा तो पीछे खा भी तो जाएगा ना। हाँ वही है, उसका ज्यादा चांस लग रहा है ना, पूरे गेम में उसी का ज्यादा चांस लगा है पीछे खाने का, तो he doesn't want to concede. Ballon d'Or is sure for Benzema this year. Interesting. Sure नहीं है, sure. If Salah wins the Premier League and Champions League both, I think फिर तो सालों भी नहीं। हाँ मुझे भी लग रहा है, लेकिन बेंजेमा डिजर्व करता है मेरा अभी तक, क्योंकि अगेन मतलब इट्स अर्ली बिकॉज़ टेक्निकली अभी 1.5 महीना बाकी है फुल सीजन। नहीं साला इज आल्सो गुड शाउट, साला और डी ब्रुयने। साला अगर क्वाड्रुपल में से समझो 3 भी अगर जीत गए तो ट्रॉफीज के ऊपर बोलते हैं कि मतलब उसका तो फिर बहुत बड़ा ये हो जाएगा। उदय लाइक 3 भी जीत गए ऐसे बोल रहा है जैसे कि क्या लेकिन हाँ दे आर नहीं वो एफए कप हारने वाले हैं। आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग क्वाड्रुपल तो नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, पर 3 ट्रॉफीज तो आ जाए एटलीस्ट, है ना। एफए कप में हम आपको हरा दें और एटलीस्ट भाई मतलब नहीं मैंने 3 उसी हिसाब से बोले थे, एफए कप को नहीं काउंट कर रहा हूं मैं। अरे वो तो हम ले जा रहे हैं, ये सब चीज ना 20-25 साल में एक बार होती है। हम बोल रहे हैं एटलीस्ट, मतलब लग रहा है कि यार इट इज समथिंग ऑफ अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन, बट दे हैव डन वेल, सो लेट्स गिव इट टू लिवरपूल अभी के लिए। बट द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक इज अगर आप 1 पॉइंट ऊपर होते हैं ना सिटी के,
तो then you would have a very good shot. City वो कितने टाइम से हारते ही नहीं है, वो अरे ऐसी यार टीम है ये बैड और डिफेंडिंग अभी यार तक छोटे छोटे टीम्स को ही खेल रहे हैं वो लोग, तो छोटे टीम्स के सामने मुश्किल है उनका हारना. लिवरपूल एज अ टफर फिक्सचर्स आई थिंक. Yeah. आर्सेनल और लिवरपूल दो, आर्सेनल और स्पर्स दोनों हैं शायद से. So, Uday, what would you think made them? As in, the change was Valverde coming into midfield. What do you think? वही था. I think Luka Modric shifting to a much lucrative position. Left mid में चला गया था वो. वही Valverde DM बन गया. He was a breaker in play. So basically wing back system थोड़ा deploy कर लिया था उन्होंने कि थोड़े दो बंदे वाइड रहे ताकि सिटी की midfield stretch हो जाए, क्योंकि flanks की ही game रही है. This is not a game where midfield has been exploited from Real Madrid's end. City के लिए it was very easy, man. उनके quick intensity, quick building up and quick passing has helped them a lot. They played their normal game. Yes. But low block में भी crosses इतने डाले हैं मारे हैं, ऐसी बात नहीं है. काफी chances थे City पास. Yeah, brilliant. Yeah, by the way, Rahul का देखिए आप comment सब लोग. This is for everyone. Everyone is watching. Do like the stream. Come on. If I'm not able to get to even 50 likes, that tells me a lot that literally you guys are not like the stream. Let me not get that message. Let's do that, man. No, but we've had like loads of people voting. हेलो आवाज आ रही है? हाँ प्लीज बोलिए. हाँ, लेकिन डू यू फील दिस इज न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश फुटबॉल? की मैंने अराउंड देखना चालू किया जब से, मतलब अराउंड 2014 से देख रहा हूँ, तो ये भी अभी मतलब वो जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ऐसी कोई टीम नहीं है टॉप 4 में जो काउंटर अटैक पे खेलती है. ऑल आर हाई प्रेसिंग टीम्स. इफ आई एम कंसीडरिंग आर्सेनल और स्पर्स, आई एम नॉट काउंटिंग मैन यू नाउ, बट आर्सेनल और स्पर्स को अगर देखो तो ऑल टॉप 4 ऑफ देम आर हाई प्रेसिंग टीम्स. तो ये भी नया कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना इंग्लिश फुटबॉल का. मैन यूनाइटेड तो फिर भी सिटी जूनियर सिटीजन कहाँ से आ गया बीच में बच्चा? वही मैं बोल रहा हूँ, सिटीजन कहाँ से आ गया. मैं हंस रहा था वही यार, गुस्सा भी नहीं आएगा उस पर तो बेचारे. उसको आराम से लेके जा रहे हैं कि बेटा निकलो. Yeah, Samarth has a brilliant point, by the way. Yeah, and I think Advay has a good point about, you know, the high press is something that is in, as they say. मतलब वो एक style है in terms of gameplay. Opposition जो करती है ना उस पर ही आप react करोगे. That is why probably they're doing, right? Absolutely. And Benzema, yes, because of France football, quite possible. Ballon d'Or हम जानते हैं, France football के बारे में काफी चीज पढ़ी है हमने और हमने कवर भी किया है. I disagree. France football उसको नहीं देगा Benzema को. It is LM8 guys. वो मेसी को ही देंगे. I'm sure of it. Okay. Yeah, that's also definitely logical. हाँ, यहाँ पर कार्ड मिल रहा है किसी को. किसको दिया? नाचो को मिल रहा है. चलो नाचो को कार्ड मिल रहा है. I think यार होने वाला है, unless City ये लास्ट फ्री किक मिल रहा है जो they will take a goal. I think it's going to be 4-3 to Real Madrid 3 and going back to Bernabeu. Wow, 4-3. It wasn't a classic. I know a lot of people will talk about it being a classic. Wasn't a classic. It was again couple of mistakes from both the sides. Real Madrid being the weaker side, obviously, but quality कम थी भाई. Only that Bernardo Silva goal was wow goal. Maybe Vinicius Junior also you would say. Wow वाला goal ये दोनों थे नहीं. और बाकी तो more mistakes. इतनी कोई खास नहीं दिखी हमें इस गेम में. स्पेशली इट वाज मोर ऑफ की डिफेंस को कैसे तोड़ना है. फॉर सिटी इट वाज की डिफेंस को कैसे अनलॉक करना है. रियल मैड्रिड के लिए तो ये था कि भाई बॉल प्रोग्रेशन मिल जाए आगे, कोई तो मिले, दो प्लेयर भागे उनके, एंड दे टुक 2-3 क्रूशियल रन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट रियल मैड्रिड की तरफ से कुछ खास कुछ आया नहीं है. नहीं, पर इनके पास तो एकदम ही बोल रहे हैं ना, वो नंबर 10 प्रॉपर नंबर 10 भी तो नहीं है ना. टोनी क्रूज भी डीप खेलता है, मॉडरिच भी डीप खेलता है, तो इतना क्रिएटिविटी नहीं है. नंबर 10 तो खत्म ही हो गया ना, पोजीशन ही आज you yourself said with the press game ना, नंबर 10. Even if you're talking about a hybrid number 10, Benzema at least occupies that space कि उनके actually यहाँ पे connection ही कोई बन नहीं रहा था. There was no equation between Valverde, Modric, Kroos, and obviously Kroos will try to create as much as he can from behind, but they were getting dispossessed. नहीं, इनके पास वो क्रिएटिविटी है ही नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. इवन इफ यू सी ना, मतलब मॉडरिच वो है, मतलब वो डाल दे तो एक दो बॉल बहुत ही एक्सीलेंट डालता है, पर उसके अलावा आई डोंट सी कि इनमें इतना मिडफील्ड में इतना फ्लेयर है, क्योंकि आपको चाहिए रहता है, आपको डिलीवरीज डालनी पड़ेगी. जब भी डिलीवरीज डाली है उन्होंने मारे हैं गोल. वो मॉडरिच का आउट. Okay, so guys, the game is done.
The game is done, and yes, everyone watching, hit the like button, and yes, Adway, I don't know, like, thanks first of all to come on midway Yeah, through, yeah, but sure. quickly I'll take your thoughts यहाँ पर before we kind of wind off. Adway, It was, I think, you can say comedy of errors ना, क्योंकि कितने सारे mistakes किए इन्होंने. Hello? yeah, हाँ, please continue. नहीं, वो मेरे में अटक गए थे. ये इतने मिस्टेक्स किए हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट दिस रियल मैड्रिड डिफेंस, मतलब क्या, मतलब एक दूसरे को बता के ही आए थे कि आज गलती करेंगे. आई थिंक फिर भी नाचो थोड़ा स्टेबल था, इतना भी ये नहीं था कि दैट वाज अ गुड सब्स्टिट्यूशन फाइनली, इतना भी नहीं, मतलब हाँ, ही वाज एटलीस्ट प्रोवाइडिंग मोर स्टेबिलिटी देन अलाबा. उसको मालूम नहीं, शायद से रूडिगर के न्यूज से वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया, क्या हो गया, पर आई एम नॉट श्योर क्या है. बट रूडिगर विल श्योरली, अगर नेक्स्ट ईयर देखा जाए ऐसे तो, मतलब रूडिगर इस डिफेंस में डालो आप तो अच्छी टीम दिख रही है फिलहाल. पर आज तो ठीक है, मतलब 4-3, मतलब थिंग इज कि इतना नहीं होना चाहिए था और वो हो गया है. आई थिंक इट शुड हैव बीन अ 2-1 2-2 टाइप गेम, पर वो इतने गलतियां की है कि वो एक दूसरे ने मार ही दी है. वो मजा मतलब आया तो है, पर हाँ ठीक है, ठीक ठाक गेम था, आई एंजॉयड. Oh, yeah. As a neutral, तो मतलब you like, obviously I like that more goals थे तो यार, लेकिन उदय समर्थ बोल रहे Milita was poor again. I don't remember a single defender wowing me. मतलब there's hardly any kind of wow moment. Maybe Carvajal getting वो एक goal line clearance किए थे, that was a नहीं, very पर important सिटी के moment. डिफेंस में भी ऐसा ही था. सिटी के डिफेंस की कोई बहुत डिफरेंट स्टोरी नहीं. But City's defense was better than या like बेटर फॉर श्योर, बेटर. Okay, Uday, I'll just ask a couple of questions here. Again, people joining, जो भी join कर रहे हैं, मुझे मालूम है कुछ लोग join किए हैं. यार पहले सबसे let's press the thumbs up button so that we have more people. Come on, get in your comments. Real Madrid fan हो, City fan हो, comment करिए. Comment करिए. आप comment नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं किसके बारे में बात करूं. लेकिन coming to the game again, Uday, I'll put that to you now. Now, first goal हमें पता है it was a clear error by fullback of Real Madrid. Second goal clear error by the right wing of Real Madrid. And Alaba जो सो गए थे, or they came back into the game, and we know king of comebacks, they came back with Benzema moment, Zinchenko kind of not doing what he's supposed to do in that particular moment, not closing down was a fact of the the entire game आप बोलोगे. लेकिन साथ में Alaba getting subbed, Nacho coming on, did Nacho change anything for you? एक maybe confidence लाया कोई Real Madrid के defense में, or was it simply the fact that they needed change for the sake of it? other than providing that physicality and sturdiness, I don't think नाचो का भी इतना कोई major influence रहा था, क्योंकि जितने 3 बॉल महारेज ने डाले थे, उनमें से 2 रूबेन डियास ने मिस कर दिए थे. उसमें भी रूबेन डियास वाज ahead of नाचो, so his positioning awareness, defensive awareness was poor. But again, that one goal that he scored as well, I mean, वो भी protect करना चाहिए था. And तो नाचो की तरफ से it was an average performance. I wouldn't rate him that high, to be honest. मुझे मजा नहीं आया देख के. मतलब रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस, ओके, डिफेंसिव यहाँ देखिए यार, यहाँ देखिए whom do we have? I don't know whether it was me tweeting too much today about the stream कि एलॉन मस्क खुद ही आ गए, लेकिन obviously fantastic having Elon Musk. Welcome to the stream, Elon Musk. What do you think about today's game? Do comment. Whom do you support? Most important question. कौन से क्लब को सपोर्ट करते हो? I don't know if you got that, but if you got, please comment करिए. Elon Musk brilliant रहेगा वो. City robbed, Sean Gomez said, and Madrid can't always get away with it. They have been getting away abhi tak. Maybe that is a tactic, like Advay has said already. wasn't robbed, to be honest. It is their own mistake, self-infliction of goals. They should have taken the रॉब्ड तो नहीं है, they should वो have won. गंदा ही खेले थे. मतलब उन्होंने चांस लिए नहीं अपने. आज तो 7-8 मारने चाहिए थे जिस तरह लग रहा था. पर क्या है बोले, धोया तो अच्छा, सिटी ने धोया बहुत. दिस इज वेयर यू नीड अ नंबर 9 ना. एक नंबर 9 अगर वो फ्लोट भी कर रहा है साइड में, वो नंबर 9 का वो मतलब वो फिनिशिंग लगती है. दे आर नॉट क्लिनिकल, नन ऑफ द प्लेयर्स आर क्लिनिकल. आई थिंक वो चेल्सी वाली बात है इनमें. Poor defending, let me invest in the defense. हाँ, आई थिंक. और ऑल्सो ना, ये रियल मैड्रिड कैनॉट प्ले विद कार्वाहाल एज राइट बैक, वो ऐसा, मतलब वो थकी जाता है. वो एस्पिलिक्वेटा वाली सिचुएशन है इसके साथ भी. एंड इफ यू आर लुकिंग एट अ न्यू स्पेल ऑफ डोमिनेशन ना, अगर आप देख रहे हो, मतलब वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू कैनॉट गो विद दिस गाय. और उसका तो बैकअप भी नहीं. एज अ बैकअप ही इज स्टिल फाइन. लुकास वास्केस इज प्लेइंग दिस बैकअप राइट बैक. चलो, Vasquez should start. Yeah, Vasquez.
नहीं, पर वास्केस तो आगे खेलता है यार, वास्केस नहीं, राइट बैक नहीं राइट बैक भी खेलता। खेल लेता है, राइट बैक भी खेल लेता है उसके। मालूम है वो तो, लेकिन वो एडजस्ट किया है उसको उधर यार, वो उसका ओरिजिनल पोजीशन तो नहीं है। But at least he would have had a better performance than Carvajal. Carvajal is to be blamed for the 2 goals that City has scored. नहीं नहीं, आई एम सेइंग ओवरऑल ओनली दे नीड अ न्यू राइट बैक, यू नो, आप जेम्स Yeah, या they need a ट्रेंट new हो, one. अच्छा, कोई let's भी talk हो। about the game now. अभी तो मार्सेलो should have started after half time with Asensio. मतलब वो इंटरेस्टिंग है फॉर मी, बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता मेरे लिए. I don't know, do you agree with this, Uday? Marcelo has passed his prime, हाँ. In the moment, impacts up वो दे देता है crosses वगैरह, but again, defensively he would have been prone as well, I think. देखा जाए तो, because वो भी attacking position में घुसता है. Ferland Mendy did not even know what to do in the match, to be honest. Ferland Mendy की presence मुझे कुछ खास नहीं लगी है. Madrid के चारों प्लेयर को मैं blame करूंगा. आज कुछ खास performance नहीं दिया है, apart from sitting No, on a roll. even Militao had a bad game. I think Yeah. obviously the guy was subbed. Alaba was subbed for whatever reason, and then Nacho भी आए तो मतलब they conceded after that as well. मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने concede नहीं किया, right? They conceded 1 goal. So मार्सेलो खिलाते तो 5-6 खा जाते हैं वो, इतना मतलब। exactly. यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड्स पोजीशन एंड गुड पासेस, लेकिन अभी वो भागता तो है ही नहीं वो। चेल्सी वाले मैच में भी आप देखो, एक एक्स्ट्रा पास टाइम से में तो उसको पीछे बिठा पूरा दिया था, beaten. उसको आई थिंक बोल के ही भेजा था कि अब आगे मत जाना एक्स्ट्रा टाइम में, कि गोल मारने के बाद, क्योंकि वो मतलब वो अब आई थिंक हिज करियर प्रोग्रेशन इज दिस थिंग वेयर ही इज गोइंग बैक टू अ स्मॉल ला लीगा क्लब और ही इज गोइंग बैक टू ब्राजील, यू नो, ही इज नॉट स्टेइंग इन रियल मैड्रिड, ही इज नॉट गेटिंग एन एक्सटेंशन फॉर श्योर। Interesting. यहाँ पर we have Will Smith in the house as well. Interesting. Again, let me check out what are the ratings. And again, people in the comments, people in the chat, again comment करिए यार. Yes, मैंने setting कर रखा है subscriber mode. आपको करना पड़ेगा subscribe. Unfortunately, that is how मेरी गाड़ी चलेगी, नहीं तो मेरी गाड़ी आगे नहीं चलेगी. Whether you like it or not, करना ही पड़ेगा. Whether you like it, it's rude. It's part of what I am doing, and I'm hoping I deserved it. So everyone, they have these small little moments of. Okay, there is someone playing something in the audio I can hear. If you can just mute yourself. Yeah. So what I'm saying is definitely I want you to everyone to comment who was your man of the match for each of the teams. Please comment करिए जो भी देख रहा है. I'll ask in English and in Hindi if in case there are some people international audience. Please comment who was your man of the match for City, who was your man of the match for Real Madrid. Please put in the comment section. And what was the turning point in the game that City weren't able to finish on a dominating note? The same question now goes to the panel. Adway, आपको आता हूँ पहले. For Real Madrid, who was... I'll say जो first half में 2 chances मिले थे ना उनको, वो after scoring 2 goals before Benzema scored his goal, I think that was a turning point. वो अगर उसमें से एक भी मार देते ना तो फिर ये वापस नहीं आने वाले थे इस गेम में. 3 goals is a bit too much, you know. फिर वही होता कि फिर सब सामने वाली भी टीम भी थोड़ा सा डाउट में रहती है, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है. वहां पे एक थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे दिया. एंड मैड्रिड, आई थिंक मैड्रिड प्लेड रियली वेल आफ्टर दैट, क्योंकि मैड्रिड ने 2 गोल खाने के बाद अच्छा रिस्पांस किया है. दे हैव एटलीस्ट केप्ट द टाई अलाइव, आई थिंक. कि मतलब वही है, बर्नाबाउ में जाके 4 गोल मारने वाले हैं. देख लो आप, यही होने वाला है. चेल्सी ने सारा मैड्रिड को बर्नाबाउ में ही हराया था. ये सिटी भी मुझे लग रहा हराएगी इनको, बर्नाबाउ में ही हराएगी इनको. नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में कम गोल्स किसके थे? चेल्सी के थे ना. इस रियल मैड्रिड के कम है. और ये मालूम नहीं इनका क्या स्कैम है, ये स्कैम 2022. ये अपने ही चलते हैं, ये मारेंगे बर्नाबाउ में 4 गोल, देखना आप. For me, man of the match for me would be Kevin De Bruyne for his massive contribution defensively. Also, he was good. Intercept कर रहा था काफी. Was getting out of pressing situations. Dribble past many people, 2-3 players at the same time. Goal मारा बहुत बढ़िया है उन्होंने. तो yeah, I think the opening goal is the most crucial goal. So kudos to Kevin De Bruyne. Karim Benzema, obviously, man of the match from Real Madrid because of the way he scored those goals. And Vinicius का भी चलो, at least out of all the other players, Vinicius का performance was better. Not a good match for him either. But हाँ चलो जो भी है. And for Chelsea fans, for ये भी बताइए, Courtois का how was he? How was like goalkeepers? Why did the goalkeepers have such a bad game? I was wondering, क्या ऐसा क्या था आज? नहीं, ये बंदा तो खाए 7 गोल खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोर्टुआ को तो मारो, उसके सामने जितना गोल मारना. मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना भाई आप. लेकिन इसमें आप देखो ना अगर, तो ऑलमोस्ट सिटी के जो टॉप 5 जो खेलता है, रॉड्री प्लेज लिटिल बिट बिहाइंड, बट
other than that everybody has a contribution, goal contribution. और अब उधर ही दूसरे साइड पे देखो तो विनिशियस का एक गोल छोड़ के और बेंजेमा का वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो मैं कहूंगा 2 हेडर उसने जो ये किया, आई थिंक उसके अलावा उस टीम में कुछ ऑफेंसिव फ्लेयर है ही नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट लेग में तो नहीं है। वो बहुत ही मतलब ब्लैंड लगा है उनका अटैक, सेम पैटर्न्स दिखते हैं और ये चेल्सी के सामने भी हो रहा था, काफी सिमिलर पैटर्न्स है अटैक के, कुछ ऐसे नया कुछ प्लेयर ऐसा नहीं है जो नया कुछ कर दे, तो आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक दे नीड टू वर्क आल्सो द समर आल्सो, दे आई थिंक एम्बापे विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बट हाँ यही है कि ये तो एक क्लियर एविडेंट इशू है अकॉर्डिंग टू It is. I agree there for sure. लेकिन again, people यार, by the way, do not forget जो भी join कर रहा है, yes, like Rahul is saying in the comment section, देखिए भाई, the mods also are doing too much मेहनत, जैसे it's about basically liking the stream, supporting us. If you are liking, that's why आप देख रहे हो, और आप लोग क्या चाहते हो basically, कुछ questions है about the game, please put in your questions. We'll be more than happy to kind of take that from Uday, who's come in at an odd hour. So please do put in your comments and check out Uday's channel as well. Link is in the description below. Yes, संस्कारी आलोकनाथ बाबू, नमस्ते। आज बहुत ही सारे फेक अकाउंट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या है, one of those days we had संस्कारी आलोकनाथ बाबू, we had Elon Musk obviously, and Will Smith, Elon Smith बोल दिया, and Will Smith तो इंडिया में ही है शायद से, I am not sure, पूरा उसका देखा था मैंने थोड़े दिन पहले। Real defense wouldn't have been this shambolic if Casemiro was there. Again, ifs and buts, we can talk. They didn't have Walker, भाई Sherlock. They didn't have Walker, Cancelo नहीं थे. Imagine जो गोल हुए, even they wouldn't have got it, right? Casemiro भी क्या कर लेता Casemiro? Midfield तो missing थी भाई. First half में midfield missing थी. But he's not that energetic either. If Valverde can disappear into thin air, what can Casemiro do? Okay, so second leg में Adway, would you see Real Madrid at home maybe Camavinga giving him a start if Casemiro is not playing next week? नहीं कैसेमीरो को तो स्टार्ट करा देंगे, अगर हाफ फिट भी होगा तो करा देंगे। आफ्टर सीइंग दिस ही विल एटलीस्ट, वो क्या है ना, कैसेमीरो पीछे से खेलता है ना तो क्रूस एंड मॉड्रिच थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इट इज वो थोड़ा और आगे खेलते हैं और फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आप चेल्सी वाले मैच में देख लो, मॉड्रिच और क्रूस काफी अच्छे से खेल रहे थे, और सेकंड लेग में वो दिख रहा था कि वो डिफेंसिव ड्यूटीज में थोड़े बॉक डाउन, तो ये तो होता है उनके साथ थोड़ा सा कैसेमीरो पीछे से। पर आज तो मतलब टुडे देयर वाज नथिंग, द डिफेंस वाज एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड, क्योंकि मिडफील्ड तो बाईपास हो रही थी, मिडफील्ड तो थी नहीं रियल मैड्रिड की डिफेंस के, विंग्स पे जा रहे थे वो, वहां से कट विंग जो भी विंग बैक था उनका कट, उसको कट करके फिर अंदर से वो पासेस दे रहे थे बस। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ क्विकली अद्वै एंड एवरीवन वाचिंग, स्पेशली रियल मैड्रिड फैंस, मतलब आई नो हमने प्रीव्यू भी किया था डिटेल में एंड विल डू अगेन फॉर सेकंड लेग, क्योंकि अभी इतना क्लोज है गेम, करना ही पड़ेगा वापस, बहुत टैक्टिकल काइंड ऑफ लगेगा इसमें, लेकिन आई हैव टू काइंड ऑफ अग्री देयर इन द सेंस दैट कामाविंगा जो लाता है ना मिडफील्ड, एक डिफरेंट एलिमेंट, बिकॉज वाल्वर्डे गोइंग फ्रंट इज दैट पर्सन जो एक ही काइंड ऑफ कैन डू बोथ द थिंग्स, तो एक लाइसेंस मिल जाता है बिकॉज ऑफ वाल्वर्डे दैट यू कैन प्रॉब्ली हैव कामाविंगा एंड देम बोथ टुगेदर। एक आर्गुमेंट है बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव लेग्स उदय compared to even to Toni Kroos. So is that an argument ki second leg mein when they are at home, they should take the initiative and probably have those legs rather than going with this tried and tested. Casemiro, obviously, I think if you would have filled in those ranks, definitely defensively maybe the output would have been better, but it was more of a game on the flanks rather than a game on the through the middle. So I feel कि हाँ चलो at least Casemiro का presence would have been a little different, but you never know क्या होता है उस time भी, maybe जैसे City was so relentless with their pressing, you never know, Casemiro would have also given into that, but Camavinga starting him is not an option I think. Obviously अगर ये injury हो जाती है, ये comment देखो उधर, Haaland out defenders in बताओ सिटी की डिफेंस इतनी भी कुछ खराब नहीं थी यार, इट वाज अगेन कि रियल मैड्रिड आर टू गुड अगेन ऑन देयर डे ऑन काउंटर अटैक, दे आर नोन फॉर काउंटर अटैकिंग, तो ऑब्वियसली मतलब इतना तो तुम गोल खाओगे ही अगर इतनी ओपन पिच, ओपन लेफ्ट फ्लैंक पूरा ओपन था, फर्नांडिनो था वहां पे, सो आई थिंक हां दे शुड हैव प्रोटेक्टेड हिम, बट या आई थिंक अरे डिड यू से कामाविंगा फॉर क्रूस और कामाविंगा फॉर कैसेमीरो? नहीं कैसेमीरो अगर वो 100% फिट नहीं, ऑब्वियसली एक कैविएट है ना, अगर क्योंकि नेक्स्ट वीक ही है मैच, इट्स जस्ट नेक्स्ट वीक,
So if Casemiro Yeah. is not 100%, so there is a thing here, instead of playing a 90% Casemiro, आप Camavinga और Valverde दोनों को खिलाओ. No, but this is also another factor you have to take into consideration is कि ये लोग next ये weekend पे लीग जीत जाएंगे मोस्टली. ये हाई एकदम वो भी होंगे, एनर्जेटिक भी होंगे, थोड़ा सा वो कहते हैं ना रेजुवेनेटेड भी होंगे, क्योंकि इनको एक ही पॉइंट चाहिए शायद, तो वो मिल जाएगा अरे उनको. we have a tackle from behind in the house. भाई कैसे हो? Congratulations. And I'm assuming प्रणय है. प्रणय is a Man City fan by the way. बोलिए आप फ्री हो तो आ जाओ बात करने के लिए, अच्छा रहेगा. मतलब certainly always open to hear your views, especially एक बहुत ही बड़ा win यार. मतलब for you almost Man City के लिए where does it stand? Uday, I know it's 4-3. Technically आप बोलोगे just like Chelsea fell last year के Champions League. It's kind of deja vu for Real Madrid also, क्योंकि first leg में we should have finished the tie totally. Or Man City had that chances, लेकिन they finally were not able to finish. So, but in their moment in history, this has to go down as one of the most important wins. That's the reality of it, Uday. So they will only like, I think Adway made a great point कि Real Madrid जीत जाएगी league most probably weekend में, so they will be on a high. लेकिन Man City यार after this historic victory against Real Madrid in a semi-final 4-3 and they have a lead going into second leg, I think, I don't know, I would like to be in City's camp. What do you think? Look, what I predicted had to happen. This is the same form that Real Madrid showed against even the other teams. So let's not be surprised by this. But again, like you said, going into Santiago Bernabeu will again be a task for City, to be honest. Because that is their home stadium, and obviously they'll be, trying to counter them in that game too. But I'm expecting a change in lineup here, maybe tweaking things in formation as well. Formation तो same रहेगी, but at least hybridly अगर बात करें तो Real Madrid will have to dominate some phases of the game. जहाँ पे काउंटर अटैक भी कर रहे थे वहां भी हमें ऐसे नहीं लग रहा था कि वो चलो गोल मार लेंगे. So that wasn't happening against Chelsea or PSG. They were very dominating on those counter attacks as well. So I think we need a little more precision from the front line. बाकी हाँ देखो, it is going to be a very open game till now. एक goal lead is not enough for City, to be honest. Against Real Madrid it is not enough. So yes. Let's see what happens. चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिंक वापस से ज्वाइन शेयर कर रहा हूँ इन केस किसी को नहीं मालूम है. बाय द वे पीपल हु जॉइन लेट, हाँ डू लाइक द स्ट्रीम, डू टेक द पोल बिकॉज यस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. एंड लास्ट गोल किसने मारा था भाई मैच में? लास्ट गोल अपना यही आया था ना, पेनल्टी आया था ना, बेंजेमा Penalty. Interesting. Or who won the penalty? I think it was more about City losing the penalty. It was not about anyone. नहीं पर वो बेंजेमा ने प्रेशर डाला था ना, वो हेडर के लिए जंप किया था, इसीलिए वो पेनल्टी हुई थी. वो तो उसी का था ऑलमोस्ट. एंड विद दैट आई आल्सो लीव यू यार, गुड नाइट. पीपल आर राइट यार, ज्यादातर लोग वही प्रेडिक्ट किए थे कि बेंजेमा लास्ट गोल मारेगा. लेपोर्ट स्कूल बॉय एरर, उसकी तरफ से स्कूल बॉय एरर था, मतलब हाथ ऊपर होना नहीं चाहिए था. तावेरेस वाली उसने वही गलती की जो चेल्सी अगेंस्ट उसने की थी, सॉरी यूनाइटेड के अगेंस्ट. नहीं, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था बोल सकते हैं कि मतलब जानबूझ के तो नहीं हाथ बाहर निकाला था उसने, मतलब ऐसे स्कूल पर. हाँ मतलब गलती मिस्टेक होती है, पर हाँ इट इज आई वोंट से स्कूल बॉय एरर. Okay, now tell me again, this is a controversial question. Who's had the better UCL season, Benzema or De Bruyne? De Bruyne 7 goals, 6 assists in last 11 matches in all competitions. Who's had a better calendar year till now? Let's put it that way, right? कौन सा better calendar year रहा है किसके लिए? कैलेंडर बेंजेमा का रहा है. Benzema, okay, fair enough. लेकिन वही बेंजेमा क्या स्टैटिस्टिकली याद हुए प्लीज. नहीं मैं भी बोलूंगा बेंजेमा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि डे ब्रुइना को अगर आप सिटी से निकाल दो ना तो दे विल स्ट्रगल, पर उनमें और प्लेयर्स भी है. रियल मैड्रिड से आप बेंजेमा को I think his audio is gone, but Uday I think was making a point about that ना कि यार जो crucial goals मारे ना बेंजेमा ने, he probably got them through competitions. Statistically, obviously, but if you look at the system, De Bruyne is the system in Manchester City, and even he is a talisman for Real Madrid, no doubt. So comparison करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा. तो I think लेकिन फिर भी बेंजेमा statistically ऊपर है, तो बेंजेमा का कैलेंडर ईयर बेटर है De Bruyne से. करेक्ट. लेकिन हाँ आई नो दैट उदय आपको जाना है, एंड वी विल बी वाइंडिंग अप द स्ट्रीम आल्सो. नाउ मैंने लिंक शेयर किया है बाय द वे, पीपल इन चैट, बाय चांस आपको आना है, स्पेशली सिटी और रियल मैड्रिड फैंस है तो प्लीज आइए. एंड बिफोर दैट do check out Loudmouth Football, the channel link is in description below. Do check it out, trust me, मैं बोल रहा हूँ तो सोच समझ के बोल रहा होगा. Do check it out and do subscribe and on Almighty Blue FC as well. मैंने जैसे बोला, मैं खुद 240 चैनल सब्सक्राइब कर चुका हूँ. It doesn't cost you anything.
notifications up to you totally. लेकिन we will bringing the review proper as well tomorrow, and we are live at 8:30 as well. लेकिन the last thoughts Uday before going. Crazy match. It was a crazy game. But I was a little disappointed with Madrid's performance. But ठीक है, गोल मार दिया उन्होंने. ये expect किया था चलो कि एक गोल का मार्जिन होगा और वही हुआ है. So let's hope for the best कि Madrid wins this because I need to take my revenge against them in the finals. So. Interesting. Yes, and your last thoughts, Advay? हाँ मतलब क्रेजी मैच तो था, हाई स्कोरिंग भी था. बिल्कुल, मतलब मैड्रिड का डिफेंस तो बहुत ही बुरा खेला है आज, मतलब एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड. पर सिटी भी बहुत मतलब अच्छा नहीं खेली है. दे अटैक्ड वेल. बाय या सिटी अटैक्ड वेल, बट पीछे तो वो भी थोड़े बुरे ही थे. मतलब इफ यू डू दिस अगेंस्ट अ प्रीमियर लीग साइड, you will also concede 4 or 5 in a game. Yeah? They were defensively, they were also very poor, I think. But हाँ, मतलब वैसे तो आपको high scoring game as a neutral is what you enjoy also. And Mumbai City also is at half time 1-0 ahead. So मतलब the dream is on. मतलब चार गोल मुश्किल है, पर ठीक है, चलो एक तो मार दिया. और चलो कोई नहीं. Also I will take your leave. Good night. I think. Yes, absolutely, Advay. So always good to have you, Advay. Like again, people, you will hear Advay hopefully in the future as well. Like Advay, wish you all the best. Hopefully, हम वापस मिलते हैं on a good note when Chelsea, play next year. That's what I would say. Big match. By the way, Thursday हम stream कर रहे हैं वापस for that as well. So that'll be interesting. Yeah, United is on Thursday. Thursday मतलब कल रात को है या Thursday night? Thursday late night. मतलब Thursday night. Friday morning. तो थर्सडे हम स्ट्रीम कर रहे हैं उसके लिए, और वेडनेसडे हम स्ट्रीम कर रहे हैं लिवरपूल विलारियल के लिए. पहले नहीं बाय द वे जस्ट चेल्सी न्यूज़ ड्रॉप करना है तो मैं थोड़ा सा कर देता हूं अभी. कि डुजॉन, स्टर्लिंग और कॉलवेल दोनों को टुकेल इज आई थिंक वेरी, उसको वो बहुत डियरली चाहिए. और वो नेक्स्ट ईयर उनको इंटीग्रेट कर रहा है मोस्टली स्क्वाड में. और न्यूज़ आ रही है कि चलोबा शायद जा रहा है लोन पे, व्हिच आई डाउट हैपेंस, बट हां ये न्यूज़ आ रहा है. राइट. So yeah, I think again मतलब early to call, लेकिन मेरे ख्याल से that is the way to go, because I think we have to rely on our youngsters अभी के लिए. They are more trustworthy जो हुआ है उसके बाद. लेकिन नहीं, but I am very, I agree with this decision. If they're sending Chalobah on a Premier League loan, I think he has just done a loan in Championship. I think he's not got the Premier League. I think आज इस साल भी उसने खेला तो अच्छा है. That start, if you're going to be Chelsea, at least third centre back also, you need at least 20 starts in a season. That he doesn't have. I think Liga Southampton very well, but again, Liga is a different league. No, he is a good player. He's a good player, no doubt about that. Correct. Yeah. So चलो कोई नहीं. Again, I know people have joined late. We will. Advay is gone, but anyway, यार Advay bye शायद तो बोला करो जाने से पहले. कोई नहीं. But anyway, before that, people, let's like the stream and remember 8:30 p.m. tomorrow. Technically today in India. Yes, today 8:30 p.m. we are live. What a game! 4-3. For me, man of the match, it's got to go to Kevin De Bruyne. Closely followed by Benzema, like Uday had said. लेकिन हाँ, check करना, links in description. Do take the poll. मैंने end किया था poll. I saw that a lot of votes correct गए and you guys predicted. नहीं एक्चुअली हाँ, करीम बेंजेमा और बर्नार्डो सिल्वा के बीच में था और दोनों ही गोल्स किए लेट, एंड फिल फोडन एज़ वेल. सो इंटरेस्टिंग वोट्स. लेकिन वी आर बैक 8:30 PM फॉर लिवरपूल विलारियल विद अ ग्रेट पैनल. मैंने सेटअप कर दिया पेज ऑलरेडी, आप देख लीजिए. एंड वी विल बी ओपनिंग स्ट्रीम्स इन द फ्यूचर एज वेल. होपफुली विल हैव अ लॉट मोर पीपल कमिंग इन. आप कमेंट करना इफ यू आर वाचिंग लेट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम, वेयर इज द सेकंड लेग हेडिंग. हम उसके लिए भी वापस आएंगे. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी ऑन थर्सडे. लॉट्स ऑफ कंटेंट देयर, लॉट्स ऑफ फुटबॉल. It is just the beginning of the end. Trust me, this season will have more turns. Brilliant match as a neutral, and keep the blue flag flying high. As Utkarsh is saying, thank you, Utkarsh. Till next time, take care and come on, Chelsea. Come on, 2 days time we have a game again. We can show that Champions League nahi hai. And all the best to Champions League folks as well. जो कल खेल रहे. Till next time, see you.